what he has got inside, what we are talking about, the talent, the technique, what he has got. So far, he's been outstanding. 16 for 1. Down the leg side, but well within the reach of the bat, so that umpire not interested, rightly so. So sometime it's going to frustrate the bowler, the way that Bashid picked that stroke, which is from the middle stem, midland leg stem. So 16 for 1. We can see that the eyes of Bashid, if it's the close view, that he has got a very good eye. Fantastic stroke. This is one of his favorite. How many times he's played that such kind of cricketing stroke. If you see every innings of him, he loves to play the shot. He loves that area that is a between deep sculling and mid wicket. Fantastic stroke. That was absolutely gorgeous. That will going to frustrate the bat bowler, in fact. You can see that where the line is, and he drags it, isn't it? Stretching his front foot. The bat speed, which is definitely going to be outstanding of Bashid. 20 for the loss of 1 wicket. That's what I'm talking about. He's got a good eye. Good eye and coordination, what you're talking about. It's not so easy under underarm cricket, especially under floodlight, when it's very difficult to sight the ball, hitting across the line of the ball against the pace. It was a phenomenal cricketing stroke. 20 for the loss of 1 wicket. The target now seems to be a little bit easier. Needed 19 runs now from 36 balls. The bowler brought into attack, Nitesh, with the jersey number 13. Now, do or die situation here for the bowlers of team SRFC Talapadi. How to restrict their opposition. Tarpadas Khan. Nitish will go into ball from the BMR end. And Shakir once again, one of his typical sweep shot, single-handed. Played it down to short square leg region for a single. With that single score, but moves on to 21 on the board for the loss of 1 wicket. Once again, captain playing the knock. Already 11 in just 5 deliveries. But a very impressive part of his every innings, if you see Bashid, his strike rate is very impressive. He's always more than 150, 170. Less than ball, he managed to score the potential he has got. Nishit balls far away outside the line. And now it's definitely that will going to be a call for the umpire. That's definitely it's a no ball, but umpire have to see that, because sometimes we can't see the line. There is a one line we can see that the pitch line. And I think in naked eye it might be a no ball, but third umpire has been given. Will it going to be a no ball or not? Umpire Roland Pinto will going to watch whether it is good enough to call the no ball or not. So it's inside the line, so just inside the line, wide, which is going to be a third umpire decision. Roland Pinto. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜೂಕ್ FCT ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. FCT ಪುತ್ತಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ MSC ಟ್ರೋಫಿ 2025. 22 for the loss of 1 wicket, 17 more runs required for the victory. This time wanted to go for the expansive drive. Oh, this is a mix-up. Chance of run out. Oh, that's a high throw. Now Bashid is back in the pavilion. Shakir is not responded for that run. Just have a look at the replay. Bashid just wanted to go for the big shot. And the slower one, you can see that. And the swing of the bat, deflected from his leg. Ball went quickly to that third man. Fumble there, absolutely fumble there. Might be if Shakir were going to respond for that run, there is a certain single. There absolutely certain single, no doubt at all. But once he made that, you don't want to go to the run. Unfortunately, the man in form is back in the pavilion, captain of the side. But again, he played a good innings for double figure. 11 runs from just 6 balls. It's a 22 for the loss of 2 wicket.
The new batter is Akram, walking towards the middle. On more experienced batter for the side of Torpedoes Khana. Akram. Second wicket back in the pavilion of Torpedoes Khana. 34 balls remaining and 17 runs required for the victory. If SRFC manage to pick another 2-3 quick wickets here, they can put some pressure onto the batters. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, beaten by the turn of the ball. Fantastic line and length, perfect delivery to ball to the fresh leg. Akram absolutely uncertain what to do, whether go for the front foot or back foot. Try to push the ball, luckily that ball misses his bat and wicketkeeper did the rest. This time he managed to get single down to square leg. One more addition, 23 for the loss of 2 wickets. For the next match, second semi-final, I request the host team, KFC Kodical, and of course captain of team Young Friends Urwa, please be reported here immediately for the tossing ceremony. Shakir will go to take the strike. He's batting on 4. Sam again, lovely bowling performance here from Nitish. Just keep the batter quiet. Again, Shakir just wanted to go for the sweep shot. Beaten by the flight and turn of the ball. No runs scored. Nitish. Sam nicely placed that one down to long on region. Daivik, the fielder in the deep. One more addition with the addition of that single scored Namuzan to 24 for the loss of 2 wickets. So 3 overs completed after completion of over number 3. So 24 for the loss of 2 wickets. 15 more runs required for the victory in remaining 5 overs. So 24 on the board for the loss of 2 wickets. Now 6 more overs remaining and 5 more overs remaining in fact, and 30 balls and 15 runs required for the victory. The first ball lost up that one very nicely down to square leg region for a single. Scoreboard numbers under 25 on the board. Nitin, the bowler, brought into attack from the ascent end and we bowled the first delivery and conceded a single. 25 for the loss of 2 wickets, 14 more runs required for the victory. So some attacking field is badly required for team SRFC, but still there were 4 fielders inside the ring, 5 outside the ring. Played it just wide of that mid-wicket fielder and bowler. Akram picked up a single. No need to panic at all. Both the batters knows that rotation of strike is much required here for the team Torpedoes Khana to reach to that target of 39. Now 26 on the board, 13 more runs required for the victory. Down the leg side.
the punishable from the umpire. The ball which is missing the direction, and the scoreboard numbers on to 28 for the loss of 2 wicket. 27, correction. 12 more runs required for the victory. Nicely driven for a single by Shakir. Addition to total, now it's a 28. 11 to get, 27 balls remaining. Slowly, the Torpedoes Khana are cruising towards the victory. Again, Akram nicely played it down to long on for a easy single. Hit the bat pretty hard into the ground. Tried to flick that one off his legs. 29 for the loss of 2 wicket. 10 more runs required for the victory. And 26 deliveries. Nitin. Nicely played it down to mid-wicket region. Only for the single. Good pick-up and pick-up by the fielder in the deep. By Nishant. 30 for the loss of 2 wicket. 9 runs away from the victory. Again, pushing and running. Again, they completed a single. 1 more over completed. 4 gone. It's 31 for the loss of 2 wicket. Just 8 more runs required for the victory. In our screen, we are watching Pradeep. Pradeep is having a smiling face. Why not? They are almost cruising towards a victory. Almost there in the finals. Just 8 runs away from the victory. So now, 5th over going to start from the far end. Izaz brought in the attack to bowl that 5th over. 8 runs required for the victory. Izaz from the far end. So no ball called by umpire. No ball called by umpire. Definitely it's going to be absence of mind. Ball went into the fence for 4 as well. And that ball defeated everyone. And 1 plus 4, 5 runs added to total. 3 fielders behind the square. And so rightly so, umpire called it no ball, rightly so. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery for the batter. 36 on the board, just 3 runs required for the victory. So you can't keep 3 fielders behind the square. The one at fine leg, one at square leg, one at deep square leg behind the square. So that's why you need to keep the fielder in front of square little bit in square side between mid wicket and square leg. They're coming into the fine means fine square leg. It's going to be 3 fielders behind the square. Just 3 runs away from the victory for Torpedoes Khana. Outside and left side, wide call by umpire. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮೆಗೆಗಾಗಿ. ತಮಗಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Urwa ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. This time Akram just wanted to finish the things off quickly. Just 2 runs away from the victory, but fails to make a proper connection. Lofted fielder is there in the long off. Couldn't manage to get that one. Daivik Prabhu. The scores are leveled. Just 1 run away from the victory. This is going to be a great
finish for the season for the Torpedoes Khana, and the consecutive third entry for into the finals in last 2 weeks. Been outstanding performance from Torpedoes. Just one required for the victory. Izaz bowling to Shakir. That's it. A typical finish by Shakir by the single hand sweep. Congratulations, Torpedoes Khana. Once again, in 2 weeks there, this is a consecutive third finals for them. The first team to qualify for the finals of KFC Trophy and KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friend Circle, registered in this UCG cricket ground. It was a dominated performance, convincing victory for the team Torpedoes Khana. And hard luck SRFC Talapadi to coming here and participating in this big tournament in the main pool. You need to appreciate, we really appreciate your presence in this particular tournament. Thank you so much, SRFC Talapadi, for your competition, your participation in this KFC Trophy 2025, KFC Champions Trophy 2025. The congratulations for Torpedoes Khana for entering into the finals of KFC Champions Trophy. So man of the match, which goes to all-round performance by Shakir of Torpedoes Khana. I request Shakir, please go and collect your man of the match award from our chief guest. At the same time, link will go into change of this live telecast. Please note, Bedra Media will go into change the link of this KFC Champions Trophy 2025. Please note the changes in the link and follow this KFC Champions Trophy, because the next match is a big match between host KFC Kodical versus team Young Friends Urwa. It's going to be a huge match, a big match, and toss which is completed. Toss won by the captain of KFC Kodical, and they are rightly elected to the ball first against Young Friends Urwa. We'll take a short break in our commentary box. After a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone for this excellent match, high voltage match between Young Friends Urwa versus team KFC Kodical. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಕಿರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ SRFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ 10F3 ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. शुक्रिया सतीश. तो जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल मैच यंग फ्रेंड्स उर्वा और KFC कोडिकल के बीच शुरू होता हुआ. दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए. और जहां तक सवाल है KFC कोडिकल के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. और अरशद और साजिद आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त आशिक और मैच की पहली गेंद लेकर और यंग फ्रेंड्स उर्वा की पहली पारी की यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आशिक तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया और गेंद पहुंची शॉट गली पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1+1 इनफैक्ट 2 रन एडेड टू द टोटल. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए. 2 रन बिना किसी नुकसान के. और इस बीच आशिक का गेंदबाजी करेंगे साजिद के लिए. और साजिद दम पर से गांठ लेने के बाद अपने ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और आशिक दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन गेंद को देखा कि लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है. जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक सही गेंद अब उनके पारी में फेंकी जा चुकी है. और गेंदबाज इस बीच आशिक दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड एट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. साजिद इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. हर्षद जो कि सामना करने के लिए तैयार. निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा को एक बेहतर शुरुआत की जरूरत. और इस बार अरशद ने गेंद को उछाला, लेकिन फील्डर मौजूद वाइड स्लंग ऑन पर जस्ट अ सिंगल ही आउट. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान का. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट स्टार्टेड. 4 विदाउट लॉस इनफैक्ट इन द ओवर नंबर फर्स्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो. और ये गेंद उछालना चाहा साजिद ने, गेंद को इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पाए और लेग पाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. और 4 बेहतर गेंदें आशिक इस वक्त फेंक चुके हैं. और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए कट करना चाहा. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. और इस ओवर में अंतिम बार आशिक का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए. लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा. अभी भी एक गेंद बाकी इस ओवर में आशिक के. और आशिक का फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अरशद के लिए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त अरशद ने. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया.
और 1 रन के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। और पहले ओवर के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर यंग फ्रेंड्स उर्वा आफ्टर बीइंग losing the toss against KFC Kodical and put it to bat. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board after completion of first over. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बना चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा। पहले बल्लेबाजी करते हुए द्वितीय सेमीफाइनल मैच में इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत जहां तक सवाल है दूसरा ओवर का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है एरिस इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए। और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में। फर्स्ट बॉल कम्स और दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स की पारी के में इस वक्त शुरू होता हुआ। एरिस पहली गेंद लेकर तैयार था, इन्हें हाथ ऊपर था विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक एंड विद अ सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 8 ऑन द बोर्ड हियर टू लूज एन विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और फिर से एक बार एरिस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे साजिद के लिए। और साजिद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार एरिस की गेंदों का। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, अपील जरूर, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ हद तक। और इस बीच इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, नो इनफैक्ट इट्स ऑफ द लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। रन से ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए। और अरशद बजाल और साजिद इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पर करते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा को। और एरिस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अरशद के लिए। यह गेंद उछालना चाहा अरशद ने लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। और इस बार शॉर्ट गली पर गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा, इट्स ऑफ द लेग इनफैक्ट। उनके पैरों पर टकराने के बाद गेंद निकली थी इस वक्त शॉर्ट गली पर 1 रन का इजाफा। 10 ऑन द बोर्ड येट टू लूज एनी विकेट एंड द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एरिस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन्हें हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बाई का इशारा, सिर्फ एक मात्र रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड ये टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अरशद इस वक्त अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और एरिस गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद अरशद के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त लंगोन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। अरशद का स्ट्रोक था दमदार लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और वारिस लंगोन पर जो फीडर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका। और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। अरशद बजाल का बेशकीमती विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और अरशद अपना बल्ला यानी बैट देखते हुए पेविलियन की ओर लौटते हुए। और पहला विकेट इस वक्त हो चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा 11 रनों के ऊपर। इट्स 11 for 1 इन द सेकंड ओवर फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। तो अरशद बजाल का विकेट गिर जाने के बाद अजीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ। He's now comes out to the middle as a number 3 batsman for young friends उर्वा। और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार रहा एरिस की गेंदों का। और एरिस अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम के लिए इस ओवर की अंतिम गेंद। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रन। अपने पेस को वृद्धि करने के प्रयत्न में लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद को इस वक्त फेंक दी थी गेंदबाज एरिस ने। और वाइड इस वक्त बल्लेबाज
को नहीं टीम को इस वक्त मिल चुका है 12 रन 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एरिस अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया केएफसी के कप्तान हकीम द्वारा गेंद को, और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति, हकीम के हाथों में गेंद, और देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर रन्स सिंगल्स के रूप में बने हैं अब तक यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज प्रीतम निजाम, माफ कीजिए, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। आमतौर पर रात के वक्त हवा का रुख काफ़ी हद तक कम हो जाता है उर्वा क्रिकेट मैदान पर, और बल्लेबाजों को खुल कर स्ट्रोक्स खेलने में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसका लाभ यहाँ पर गेंदबाज उठाते हैं। आमतौर पर यहाँ पर ज़्यादातर श्रृंखलाओं में देखा गया है, और यहाँ पर देखना है कि परिस्थिति को किस तरीके से बल्लेबाज अपने नियंत्रण में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने के लिए। इस बीच ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट, ड्रिवन दैट वन डाउन टू मिड ऑफ एंड गॉट अ सिंगल। तो निजाम अपनी गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्वाइट क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द इनिंग्स ऑफ यंग फ्रेंड्स उर्वा, और अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया वाइड लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। Singles coming quite easily enough for the batsmen of young friends Urwa. The situation 15 on the board for losing 1 wicket in the over number 3 in progress. आजिम इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त पॉइंट पर रहा। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हुए अजीम और साजिद इस वक्त, और हर गेंद पर सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पर 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर 16 रन, माफ कीजिए 16 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है निज़ाम का, तो निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश करते हैं एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर पर रहा। जस्ट सिंगल ही गॉट 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज के एफसी कोडिकल के इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस बीच अजीम सामना करते हुए निज़ाम की गेंदों का। यह गेंद इस बार ड्राइव जरूर किया लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और जब तक गेंद को मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस बीच निज़ाम अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद खाली क्षेत्र चुनते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को पंच किया था इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से। 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। 3 gone, 18 on the board, 1 wicket loss, 20 on the board in fact, 1 wicket down after completion of 3 overs with 5 to go in their innings. निश्चित रूप से इस वक्त काफ़ी बातचीत चलती हुई कि एफसी के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है, और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस श्रृंखला का दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर। प्रथम सेमीफाइनल मैच में टॉर्पेडोज काना विजय दर्ज करने के बाद इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। एसआरएफसी तलापाड़ी के खिलाफ टॉर्पेडोज काना ने विजय दर्ज किया था, और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका, और दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में इस वक्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष यहाँ पर जारी है यंग फ्रेंड्स और केएफसी कोडिकल के खिलाड़ियों के बीच। दक्षित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, और आजिम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त आजिम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज दक्षित इस वक्त ये गेंद दाहिने हाथ के गेंदबाज दक्षित की गेंद का, और इस बार रनआउट का खतरा था लेकिन निशाना चूका अंतिम क्षण में। तो जोखिम भरा रन जरूर था लेकिन दोनों बल्लेबाज यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए वाइड का भी इशारा हो चुका है। दैट मीन्स कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज दक्षित
अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को चिप कर दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। दक्षित अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, अजीम इस वक्त सामना करते हुए, दक्षित की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगली गेंद गेंदबाजी करते हुए, ये क्या, ओह फैंटास्टिक, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, लेकिन अपील इस वक्त जारी है, लेकिन आखिरकार शायद गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी, तो इस वजह से अंपायर ने इसे नकार दिया, लेकिन बेहतरीन गेंद थी कहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर दक्षित। और इस गेंद पर पूरी तरह यहाँ पर बल्लेबाज चकमा खा गए, और क्लोज व्यू से इस वक्त दिखाया जा रहा है, देखिए, और बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग, बट आई थिंक इट मिसिंग जस्ट outside the leg stump at the last moment। 23 on the board for losing 1 wicket, 4th over in progress। और दक्षित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछालना चाहा, इस बार plumb in front given, fantastic delivery once again from Dakshit and he just got the rid of the batsman। इस बार देखिए किस तरीके की गेंद थी और बल्लेबाज किस तरीके से पगभादा यानी लेग बिफोर विकेट घोषित किए गए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतर गेंद, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली प्लम। और विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके दक्षित बेहतरीन गेंद के जरिए, और अजीम का विकेट यहां पर गिर चुका। 1 more wicket fallen, second wicket loss for young friends Urwa। Now they are 23 for 2 in the over number 4 in progress। We are just waiting for the number 4 batsman at the situation of young friends Urwa। और नंबर 4 बल्लेबाज राजेश उबर इस वक्त बल्लेबाजी पर उतरते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे दक्षित की गेंदों का। अब तक दक्षित ने पहले 3 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया, हालांकि वाइड के साथ उन्होंने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बाद के 3 गेंदों में अपना सही रिदम लाइव प्राप्त करते हुए विकेट यहाँ पर अजीम का उखाड़ने में सफल, और राजेश ऊपर का आगमन होता हुआ इस वक्त कुछ समझाते हुए दूसरे छोड़ के बल्लेबाज साजिद उनको कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए इन हालातों में, अंडर दी सर्कमस्टेंसेस। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए विकेट कीपर इजाज और नए बल्लेबाज राजेश उबर इस वक्त सामना करते हुए दक्षित की गेंदों को, और दक्षित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज राजेश उबर के लिए अगली गेंद। तो फील्डिंग में भी जमावट यहाँ पर चलते हुए, और राजेश सामना करते हुए इस वक्त दक्षित की गेंदों का, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, राजेश ने ग्लांस कर दिया कहना पड़ेगा, शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और इस वक्त साजिद जो कि 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन क्रीज पर जमने की इस वक्त तो पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए और सामना करने के लिए तैयार दक्षित की गेंदों का, और दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज दक्षित इस ओवर में गेंदबाजी करते हैं, अब तक सिर्फ 4 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं, और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर, फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम दक्षित who conceded 4 runs and got the wicket of Azim in his first over। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 4 overs completed and after 4 overs young friends who were still searching for the right targets, 24 for the loss of 2 wickets, now still in overall calculation 4 overs left in their innings, और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखते इन बचे हुए 4 ओवर में यंग फ्रेंड्स हुआ के बल्लेबाज किस तरह बाउंस बैक यहाँ पर करते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा चुनाने के अब अंग्रेजी में मैं मेरे काबिल दोस्त सतीश को एक बार फिर से बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. 24 for the loss of 2 wicket. Young friends Urwa after they got a good start, but the last 2 overs, the good comeback here by the bowlers of KFC Kodical, especially the Dakshit, one who bowled a fantastic over of just a single run, 4 runs and picked up a wicket as well. Here is the next ball. Played it nicely by the batter down to deep extra cover region for a easy single. With that single, Skobanda moves on to 25 on the board for the loss of 2 wicket. The over number 5 is in progress. So semi-final is in progress, and the host team KFC Kodical takes on young friends Urwa, and the competition might be very interesting between these two teams. And KFC Kodical definitely has got a dream of winning at least one big tournament here. Being the host, they have to give their 100% if they wanted to be in the final. This time appeal for leg before wicket. Loud appeal. Umpire says not out. It might be the ball is missing the stump, and leg by call by umpire. Just in fact up the line, the outside the line of off stump. Well, Sajid tried for that switch it, and loud appeal from Hakim. Quite understandable because it's going to be benefits the wicket of Sajid. Might be a different innings here from Sajid, the slower one. Also for he scored a 6 run and just 6 runs, and he faced 12 deliveries for that. But he can make up that difference at any time. He's a man in form. Nicely swept that one down to deep square like this and fumble from the field. They're grabbing the opportunity. You cannot do the mistake in the outfield, KFC Kodical, because each and every run is very crucial as far as this semi-final is concerned. They swept the ball, the fielder charging from the deep, but couldn't manage to stop the couple of runs from this batter. 28 for the loss of 2 wickets in the over number 5 is in progress. Young friends have also got a fantastic season in this tournament, one of the successful team as well. Again played it. Oh, what a fielding! Absolutely perfect there from Hakim. On his follow through, diving to his left, wrong side. It's not so easy. And even is just lost his balance, but managed to return the throw to the hands of wicketkeeper. Have a look at the replay. Straight back the bowler. Fantastic effort there from Hakim. Again, he returns the throw as well to make that run out, but not good enough. Excellent commitment from Hakim. Again, nicely flicks it on off his legs down to deep mid-wicket region for a single by the batter Rajesh. Skobanda moves on to 29 for the loss of 2 wickets. One more quiet over is in progress. Good comeback here by KFC Kodical so far. They tighten up the screws here. Once they've got the wicket of Arshad Bajal, we can see that this is one more the angle. We can see that the effort of Hakim. This time Sajid, he's lofted that one and he straight down some long on. Can you believe this? My goodness, no one can believe this. Not only the batter, but not only the commentator, but even the spectators will not going to believe that how well the ball is came into the hands of the fielder, because the way that Sajid hit that one, everyone thought that it might be a maximum. The sweet sound, connection is everything is proper, but ball landed safely to that long on. This is what the ball which is used for this particular tournament. Limited 6, but from this end, I think we are not witnessing any sixes in this end. One or two at least. But from far end towards the commentary box, we witness some sixes. That shows that the wind which is slight a bit of against the stroke when you try to hit the stroke from the commentary box, and the Sajid, the proper connection, but unfortunately it's back in the pavilion. Hakim once again got a vital breakthrough. One more huge wicket for team KFC Kodical. Now there looks in a fantastic comeback here from the bowlers, especially Hakim and the previous over. 29 for the loss of 3 wickets, 5 overs completed, 3 overs remaining. Dakshit brought into attack, is a man of the match in the previous match for his outstanding bowling spell. Rajesh will going to take the strike and just try to get that into the fine leg region, and try to make a pedal shot, one of his favorite, but this time beaten by the flight and the turn of the ball of Dakshit. Dakshit has been very impressive in his bowling
And seems to be as a future player for the team. KFC Kodical has got a potential. This time, one more dot ball. This time he wanted to go for a switch, it missed it completely. You can see that the line which is maintained by Dakshit in irrigation. And at the same time, he's not really aware of giving flight in the delivery. That's one of his strong point of his bowling. And he need to be brave enough, if isn't it? But if using this kind of balls, of course, the bowler have to take the chances. They need to be brave enough to giving some flight in the delivery, because a ball which is not hard in the nature, so it's not so easy to batter to hit the ball. 29 for the loss of 3 wicket. Dakshit again, third time in this over. Again, nicely bowled. This time, nicely place it down to extra cover region for a single. And very interestingly, Ajmal is not really knows where the ball is sometime, while his partner is play the ball down to strokes that one into extra cover region. Ajmal is just watching the ball where the ball is. 30 for the loss of 3 wicket. Ajmal, the key player now for the team Young Friends, who are the remaining deliveries. Need to bat well to get some good score, but so far KFC Kodical, of course, they are tighten up the screws again. Wanted to go for the sweep shot, missed it completely. Excellent over is in progress again from Dakshit. The bowling is second over so far in this over. He contained the batter. Only a single so far in this over from Dakshit. This time again wanted to go for the sweep shot. Misfield there by the fielder. And they will go definitely going to get. Oh, they wanted to come back for the second. Oh, in comes the Rajesh. And now looks like the one of the batsmen have to come back. One of the batsmen have to come back to pavilion. And umpire have to say which batter is going to be out. Umpire Roland Pinto saying that Ajmal the batter is need to be a pavilion. The one more success here for the KFC Kodical. They're absolutely now doing right job in the ball and from the fielding. It looks like the problem here for Nizam. That is a misfield. I think it's a bonus. Misfield has become the bonus here for the KFC Kodical. This Ajmal wants to run, and total misunderstanding between the wicket. It looks like there's something problem with that. Now we are watching in the screen the water boy, all-time 12th man of Young Friends Urwa. He's absolutely has got a tense face. It's not a happy face always, but he's absolutely having some tense because the team is not in a good position. And absolutely we can see in the picture Hanif. Every time when it's required some waters breaks, not only for his team, but he's bringing water break for the opposition team as well. He is always ready to do with the good sportsman spirit. 31 for the loss of 4 wicket. The new batter in Irshad. This is over number 6 is in progress. Last time in this over. Dakshit's outstanding over is in progress. Dakshit again. This time looks like they're appealing for something, but umpire says not alright. Nothing has happened. Outstanding over, great over there from Dakshit. Just have a look at this bowling figure. 2 overs, no made and 6 runs and picked up 1 wicket. And this 1 over, he only conceded 2 runs. Fantastic stuff there from Dakshit. Now, Young Friends Urwa, once they lost the momentum what they got, and the momentum which is KFC Kodical, absolutely they're brought in their way. Now 2 hours remaining job which is not yet over there from KFC Kodical. They have to get another 2 good overs. At least they want to restrict their opposition just under 45. They got a golden opportunity to do that so. And Young Friends was also knows that any score less than 40, it's not so easy to depend. One of the favorite ground for KFC. They has got a sweet memories in this UCC cricket ground.
winning some the great matches, great tournaments. Now Nizam to ball that 7th over. This time played it down square leg region. They wanted to come back for the second, but asking for trouble. Already they lost the wicket. 4 wickets back in the pavilion. 32 for the loss of 4 wicket. The over number 7 is in progress. This time again played it nicely down to square leg region for a single. With the addition of singles, Coburn moves on to 33 on the board for the loss of 4 wicket. What a fantastic tournament is in progress. And team KFC Kodical, the host team, has their fantastic organizing. Fantastically organized this cricket tournament. One more single. The runs are coming in the form of singles. Both the batter knows that the remaining delivery is very important from the point of view of young friends Urwa. They have to get some runs in the remaining deliveries. Nizam bowls. Irshad wanted to go for the safe shot again, not getting that much of proper connection, but good enough for the batter to complete the single. With their singles, Coburn moves on to 34-5 for the loss of 4 wicket. And 2 ball 2 singles, which is taken so far. Last 2 balls remaining. Nizam the bowler. Outside and now flap going for the run. Chance of run out in the non-strikers and backhand flick. Nizam hits the stump, but umpire goes upstairs now, asking for the third umpire to see whether the batter is sort of his crease or not. Have a look at that one. The throw which is coming from the wicket keeper, run out attempt which is made, direct hit, but wait and see whether batter is sort of crease or not. All up to the umpire now to see. Always it's going to be a touch and go. All up to the third umpire to see whether the batter is short of his crease or not. It looks like the batter is in danger. They need to see whether the bells are off, whether the batter is inside the crease or outside the crease. Very, very important. The batter is short of his crease, he is out. Is there any review for wide? Yes, one review for the wide, yes. So unfortunately, Rajesh walks towards the pavilion. It's a fair delivery. So, fair delivery. The right delivery. So batter is out as well. 35 on the board for the loss of 5 wicket. Good comeback here from KFC Kodical. What a fantastic comeback. All we can say that one stage, young friends Urwa, they are cruising towards 55 to 60 runs, but all in sudden that changes the momentum which is changed here. Nizam. This time improvised nicely down to deep third man region for a single.
Irshad the batter. One more tidy over, which is comes in and here from the point of view of KFC Kodical. Young friends Urwa searching for some big total, but they're struggling in the middle. It's 35 for the 36 for the loss of 5 wicket. 1 over remaining, last over remaining in the innings of young friends Urwa, and wait and see how many runs they will going to score. Last over, very interesting. Not a big crowd here, of course, but every part of this we can see that the crowd which is enjoying the game of cricket here, they know that this is going to be one more big match here. After that, the mega final will going to play with the winners of this match versus Torpedoes Khana. Tomorrow, one more fantastic day for cricket. Greenland Bedra in association with the Bedra Media. Underarm day and night cricket tournament will be played in the name of Bedra Premier League 2025, Bedra Cup 2025. And tomorrow and day afterward, this time lovely shot, played it down to deep backward point region by playing that switch it by Irshad. These all runs are going to be very important. The 38 on the board for the loss of 5 wicket tomorrow and day after tomorrow. And winner will going to rewarded with the 1 lakh cash prize and Bedra Trophy, Bedra Cup 2025. The runners will going to get 50,000 and Bedra Cup. And of course, with the social cause, they are organizing this cricket tournament to donate mortuary freezer for government hospital Modabidre, which is cost the 4 lakhs. And it might be a fantastic the move by the Bedra Media. This time opportunity run out in the non-strikers, and one more wicket is back in the pavilion. So 38 for the loss of 5 wicket. One more wicket is back in the pavilion. Ashwit the batter is back in the pavilion. Now whether they're going for the review or not, just I want to see. It's a fair delivery call by umpire, but Ashwit saying that that is a wide. But they already taken on review, so that no question of another review. Ashwit, the batter, is back in the pavilion. They wanted to get a single there. Now last 4 balls remaining in innings of young friends Urwa. Now KFC Kodical, what a fantastic job done by the bowlers. Even the better fielding as well from KFC Kodical, the host team. The new batter in Shahnawaz. One more dangerous batter, because that's why he's wearing red cap. He is the most dangerous sometime as far as the big innings concerned. He's got a potential of sending any soft balls out of the park. Now Ishad, experienced campaigner, knows that 4 balls remaining and his team is required some runs. Harris, one more young talented bowler, is in action. Now umpire review taken by umpire for that wide after a long time.
It's a fair delivery. It's a fair delivery. It's a couple of inches that was inside the line. No question of the wide ball. Well within the line of that leg stump line. 38 for the loss of 6 wicket. Irshad will going to take the strike. Harris will going to take the strike. Harris will going to bowl and Irshad will going to take the strike. And 4 balls remaining. Tries. Straight to the field. A chance of run out. Wide throw coming from Tazuddin at short mid wicket. Now the fielding team exceeds the time limits. Umpire Pushparaj showing his wristwatch, saying that they have to bring one fielder inside the ring because of time which is exceeds. Shanawaz is on strike now. 39 for the loss of 6 wicket. 3 balls remaining. For him, deep square leg. The fielder almost in the fine leg. One at mid wicket. There is a fielder at long off, wide-ish. This time wanted to sweep the ball. But just a single with the addition of that single score. But moves on to 40 for the loss of 6 wicket. Tight bowling performance which is continuous here from KFC Kodical. All we can see that the runs which is dried up with the boundaries and 4 sixes which are hard to combine. But we cannot underestimate that total as well in this condition. But I think if the batters of KFC Kodical, they bat sensibly, they definitely has got a golden opportunity here to get the place in the finals of KFC Champions Trophy 2025. Irshad wanted to go for the expansive drive, missed it completely. Wicketkeeper is also missed it. No signal means it's from the bat of the batter. Now they're going for the second. That might be a suicider. Irshad wanted to take the strike. That's the reason that they wanted to take that risk. More than the wicket, they wanted some runs here. 41 for 7. Now last ball remaining. Now Irshad now just wanted to finish the things with a one big shot. At least the boundary he wanted to get. Maybe the reason that why he wanted to come to the strikers end. Rifan, the tallest player in the present cricket, is a tall man. Here you go. Last delivery of the innings. This is last delivery, but last delivery is remaining here. 1+1. Oh, what going here? KFC Kodical absolutely they are missing the opportunity. Now they direct it. Look like Rifan is in trouble. They completed the. Now I think they're looking for the second. Wide already given. Chance of run out in the non-strikers end. If it is out, only a couple of runs, 1+1. If it is not out, then it's 1+2. Wait and see. Is gone. Direct it. Is back in the pavilion. So 2 runs added to total. 43 on the board. Now this is a bonus run. The KFC Kodical have to avoid this one. The Harris bowling his last delivery. I need to be a little bit careful when you're bowling that last delivery. He knows that this is the last ball. I want to get a good ball. But bowling that wide delivery is given a very important couple of runs for young friends Urwa. You cannot do the mistake, especially when playing against young friends Urwa. They got the potential of using these all extra runs. Now some discussion is going on here with the umpire and the players of KFC Kodical. They wanted to take the review.
There is okay, okay. Let's see from the strikers end. They are appealing for the run out. The striker and they are appealing for the run out. Looks like the batter drags the bat right in a time when the ball is hits the stump. Is safe. Is safe. So that 2 runs added to total 43 for the loss of 8 wicket. Last ball remaining. Irshad again has got a chance here. Will it going to be good enough for the team, young friends Urwa, to defend the total? Irshad just watching the field set. We're going to face at his final time. Wanted to go for the safe shot. Chance of run in a non-second and looks like he's gone. Excellent work done by the wicket keeper Izaz. This time Irshad again fails to make a contact with the bat. Just he tried to sweep the ball. Have a look at that replay. He tried to sweep the ball, deflected from the hands of wicket keeper, and have a look at the presence of mind there from Izaz. Quickly recovered. Excellent throw and good work there by Harris in the non-striker end as well to hit the stump, and batter is short of his crease. Now 43. The young friends Urwa managed to score and they set a target of 44 to win this match to enter into the finals of this prestigious KFC Champions Trophy 2025. At one word I want to tell you, in this particular match, the bowlers of KFC Kodical absolutely they did a great job. But all up to the batters of KFC Kodical to justify the effort of their bowlers. They need to bat sensibly because they're playing against one of the top performer. And young friend Urwa, especially coming to the UCG cricket ground, they're always the favorites. So even the 44 what they wanted to restrict the opposition, they got a potential of doing that. So that's very important here for the batters of KFC Kodical. They needed to bat sensibly. There's some batter like the batter in the form of Nizam, Akim. All the batters have to do something special for their team. Especially Ijaz is the one, the key player for the side. Have to get some good start and have to get some partnership. Wait and see how well these two teams will go into battle for the victory to get the place in the mega final. Time to change in commentary box. Let's go to Gopi for the further explanation of the match before the innings will going to start of young friends Urwa.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 44 रनों का लक्ष्य KFC कोडिकल के सामने यंग फ्रेंड्स उर्वा ने रखा है इस श्रृंखला के टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और उनके पार की शुरुआत यहाँ पर होते हुए इजाज और आरिफ अरबिक बल्लेबाज जो कि क्रीज पर मौजूद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त रिफवान और 44 रन इस वक्त यहाँ पर KFC कोडिकल को बनाना। 44 द टारगेट सेट बाय यंग फ्रेंड्स उर्वा फॉर KFC कोडिकल। और इन हालातों में, इन रात के हालात में ये स्कोर एक स्पर्धात्मक का स्कोर है अगर यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज सही तरीके से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन एक बेहतर शुरुआत निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स उर्वा KFC कोडिकल को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। पहली गेंद लेकर रिफान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, इस बार गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। इजाज जो कि सामना करने के लिए तैयार और रिफान अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इजाज के लिए ये गेंद। इजाज ने एक बार फिर से गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा। स्ट्रक विकेट गेंद थी रिफान की, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। दो बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज रिफान यहाँ पर फेंक चुके हैं और इजाज फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप किया। गेंद को अंतिम क्षण में गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है KFC कोडिकल के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। 3 गेंदें इस वक्त गेंदबाज रिफवान इस वक्त फेंक चुके। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार आरिफ जो कि इस वक्त सामना करते हुए रिफवान की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिफवान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा मिड विकेट पर, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न कहना प्राप्त करने का। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, ऐसा कहना पड़ेगा। नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट, बट लकीली फॉर द बैट्समैन इट फेल इन बिटवीन द 2 फील्डर्स एट मिड विकेट एंड द बैट्समैन गॉट अ लाइफ एंड सिंगल। 1 रन के साथ 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है रिफवान। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछाला इजाज ने स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर और इसी के साथ इजाज का विकेट यहां पर गिर चुका है। सीधा स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे संतोष जिनके हाथों में गेंद पहुंची और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, हिट दैट वन बट नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट वन शॉट और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त मिड ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। तो इजाज का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। 2 रनों पर पहला विकेट खो चुका है KFC कोडिकल और इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का। इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी टोरपेडोस काला का मुकाबला करने के लिए। और यहाँ पर इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुकाबला इस वक्त जारी है यंग फ्रेंड्स उर्वा और KFC कोडिकल के बीच। और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ ताजुद्दीन इस वक्त यहाँ पर ताजुद्दीन को अपर ऑर्डर पर प्रमोट किया गया है नंबर 3 स्पॉट पर और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। और जहाँ तक ताजुद्दीन का सवाल है, खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में वो माहिर हैं और यहाँ पर शायद इसकी ये वजह भी हो सकती है कि उनको इस वक्त अपर ऑर्डर पर प्रमोट किया गया है। और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार रिफान की गेंदों का। रिफान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रिफान इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा ताजुद्दीन ने, गली पर गेंद पहुंच चुकी है। पहली गेंद पर यहां पर ताजुद्दीन का विकेट गिर चुका है। The ball gets some extra bounce at the last moment. Got his batsman's stopper of the bat, ballooned into the air, and a simple catch went into the hands of gully fielder. Have a look at this in the replay. देखिए अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा उछाल ली गेंद, बल्लेबाज के टॉपेज पर गेंद टकराई, हवा में उछली और गली फील्डर ने आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया। तो पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में ताजुद्दीन का विकेट गिर चुका और यहाँ पर जश्न मनाते हुए खिलाड़ी यंग फ्रेंड्स उर्वा के 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिस एन एब्सोल्युटली शॉकिंग स्टार्ट फॉर KFC कोडिकल
chasing the victory target of 44 in 8 overs. They are just 2 for 2 after first over, 2 for the loss of 2 wicket after the completion of first over. एक सफल ओवर रिफॉन का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो निज़ाम एक और प्रमुख बल्लेबाज के एफसी कोडिकल की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद, वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और आरिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए अश्वित नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त आरिफ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर की एफसी कोडिकल की पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आरिफ इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अश्वित इस वक्त अपने अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। तो इस वक्त कुछ बातचीत चलती हुई खिलाड़ी और अंपायर्स के बीच में कि कुछ तो वाइड के लिए रिव्यू इस वक्त लिया गया है, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। और अंतिम क्षण में देखिए गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर इस वक्त निकले थे, और गेंद को इस वक्त गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग किया था, लेकिन गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी, और सही गेंद घोषित इस वक्त तृतीय अंपायर द्वारा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज अश्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आरिफ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, क्विकर गेंद थी, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा क्विकर वन फ्रॉम द बॉलर। ऑन साइड पर मोड़ने के प्रयास में चूके गेंद लगभग उनको वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर इरशाद के हाथों में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज फिर से एक बार अश्वित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आरिफ के लिए अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, 1 मोर डॉट डिलीवरी। द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अपॉन द बैट्समैन, और एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त इस ओवर में अश्वित। पहले रिफान ने बेहतर गेंदबाजी की पहले ओवर में, और उसके बाद अश्वित उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर कायम रखते हुए, और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज अश्वित इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, आरिफ सामना करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई फिर से सही गेंद को छोड़ दिया था, कुछ हद तक मिस जजमेंट यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा। प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर देखा जरूर, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से अंपायर ने इस गेंद को सही गेंद घोषित किया, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है सिर्फ 2 रनों पर, 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली डाउन टू शॉट फाइन लेग, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। रन्स आर हार्ड टू कम बाय एट दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ एफसी कोडिकल, एंड अ गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ यंग फ्रेंड्स उर्वा। और 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच जहाँ तक संभाल है इस वक्त निज़ाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई इस ओवर में अंतिम बार अश्वित दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज निजाम के लिए
अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और ये गेंद इस वक्त अश्वित की गेंद कौन साइड पर इस वक्त खेलना चाह गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा लेकिन इस थ्रो को रिसीव करने में सफल गेंदबाज और आखिरकार एक रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। जोखिम भरा रन बल्लेबाज निजाम पूर्ण कर चुके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा कि एफसी कोडिकल अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ। स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 40 runs exactly required in remaining 36 deliveries now with the required run rate of exactly 6.66 runs per over। और काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई ऐसा कहना पड़ेगा। पहला 2 पावर प्ले ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ यंग फ्रेंड्स उर्वा। दोनों गेंदबाज जो रिफान और अश्वित जो इन 2 पावर प्ले ओवर में इस्तेमाल किए गए हैं एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी उन्होंने की है। और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। 3rd ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। रिफान अपने ओवर की दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। निजाम सामना करने के लिए तैयार। रिफान की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त रिफान गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर चूके वाइड का इशारा अंपायर का। और 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। काफी तेज गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरते हुए दिशाहीन गेंद थी। और 2 रन एक्स्ट्रास अतिरिक्त के रूप में प्राप्त करता हुआ यहाँ पर केएफसी कोडिकल। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इन फैक्ट रिफान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। आरिफ इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिफान अगली गेंद। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते विकेट कीपर चूके इस वक्त ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच इशारा है अंपायर के, इंतजार है अंपायर के इशारे का और वाइड का इशारा। 8 रन 2 लगातार वाइड रिफान इस वक्त फेंक चुके अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए। हालांकि अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन उन्होंने फेंका था। सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे। लेकिन इसे दूसरे ओवर में कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी सही लेंथ और लाइन न प्राप्त करने के लिए और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। और निजाम इस वक्त सामना करते हुए द्वितीय सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केएफसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। और इस बीच रिफान ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया मिड विकेट पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। He swept well but can't find the gap। और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर फील्डर के हाथों में लपक ली गई है। उछाला जरूर था लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड ही जस्ट paid the penalty for that। Third wicket gone and now Nizam departs। KFC Kodical looking deep in trouble। It's 8 for 3। तो 3 विकेटें 8 रनों पर गिर चुके हैं। हालत काफी हद तक नाजुक इस वक्त दिखाई देते हुए केएफसी कोडिकल के। जहां तक कमबैक करने का सवाल है इस वक्त चाहिए केएफसी कोडिकल को एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप। आकाश इस मोड पर क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर जाते हुए सामना करेंगे रिफान की गेंदों का। तो रिफान 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद अगली गेंद पर अपना विकेट प्राप्त कर चुके। निजाम का डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक लिया गया और 3 विकेटें गिर जाने के बाद संकष्ट की स्थिति में नजर आती हुई इस वक्त केएफसी कोडिकल। और इस बीच रिफान फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज रिफान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज आकाश इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ
राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, गेंद तक पहुंचते हुए फील्डर फाइन लेग पर एक रन का इजाफा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट and with that single run the scoreboard moving up to 9 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक काटे का टक्कर जो कि यहाँ पर जारी। और गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है इस वक्त रिफान न गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, आरिफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर शायद मौजूद है वहां पर, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल ही गॉट और काफी दमदार स्ट्रोक था इस वक्त आरिफ का, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिफान फिर से एक बार तैयार, आकाश के लिए स्वीप किया इस वक्त। आकाश ने गेंद हवे में जरूर थी, मौका जरूर था शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के लिए, लेकिन वहां पर इस कैच को लपकने में असफल फील्डर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिले 11 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और जहाँ तक स्ट्राइक का सवाल है तो आरिफ के पास इस वक्त स्ट्राइक और रिफान न गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिफान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद आरिफ के लिए, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर ने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया। बेहतर गेंदबाजी, धीरे धीरे अपने सही लय सही रिदम पर इस वक्त वापस लौटते हुए गेंदबाज रिफान इस वक्त सही गेंद लगातार फेंकते हुए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress। 44 the target in 8 overs for them। और रिफान ये गेंद स्वीप करना चाहता आरिफ ने, आकाश के लिए खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर इरशाद ने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा। शायद कोई बैकअप वहां पर नहीं था मिड ऑफ और मिड ऑन पर, और इस वजह से बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी KFC कोडिकल जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 11 रन जोड़ चुका 3 विकेट के नुकसान पर। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन। 44 minus 11, that means 33 runs required in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 6.60 runs per over, और 6.60 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त 30 गेंदों में, बचे हुए 30 गेंदों में 33 रनों की दरकार। 30 balls left, 33 runs required। चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अरशद बजाल, और पहली गेंद लेकर तैयार आकाश इस वक्त सामना करते हुए। निश्चित रूप से कमबैक करना है तो KFC कोडिकल को इस वक्त एक लंबी साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर निभानी होगी। और जहां तक सवाल है इस वक्त अरशद का, तो बाएं हाथ राउंड द विकेट अरशद इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, पहले 3 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है, और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर अरशद बजाल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज आकाश इस वक्त सामना करते हुए। फर्स्ट बॉल कम्स, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद को खेल नहीं पाया ठीक तरह से, और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ। The scoreboard stays at 11 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over in fact। और अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद हवे में जरूर, लेकिन फील्डर स्क्वायर लेग पर थोड़े से पीछे तैनात। नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 12 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। Still 32 to get from remaining 28 balls। और अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे आरिफ के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हियर ही बाउल्स। ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सुरक्षित देखा कि गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर द्वारा फील्ड किया जा चुका है, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर। 12 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। और अरशद फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंच चुकी है डीप मिड विकेट पर, फील्डर पीछे से
थोड़े से पीछे तैनात बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे काफी पीछे तैनात थे, जब तक गेंद को तक वो पहुंचे और कुछ मिसफील्ड के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 14 ऑन द बोर्ड रन इस वक्त चाहिए केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को। वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार धीमी गेंद, लेकिन इस धीमी गेंद का फायदा उठाने में सफल, ऐसा कहना पड़ेगा। इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाया, स्लोनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर पेस का चतुर परिवर्तन यहां पर किया था अरशद बजाज ने, धीमी गेंद पे की। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार उछालना चाहा गेंद को, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल, दे लुकिंग फॉर द सेकंड, दे कम बैक फॉर द सेकंड, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड रन आउट हैपन एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। तो इस वक्त डाइविंग लगाते हुए अरशद बजाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद डाइविंग लगाते हुए बिल से इस वक्त उड़ा दिए, और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है आकाश का। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। स्टिल द प्रॉब्लम्स आर नाउ कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ केएफसी कोडिकल। 4 ओवर का खेल बाकी, और 4 ओवर में इस वक्त रन्स बनाने हैं 30। 24 बॉल्स लेफ्ट, 30 रन्स रिक्वायर्ड, 6 विकेट दे गॉट केप्ट इंटैक्ट। और देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में क्या 30 रन उनके बल्लेबाज बटोर पाते या नहीं। तो आइए सतीश आगे का खोदिकाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं। 30 रन, 24 एक्जैक्टली 7.50 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम, एंड स्टिल दे गॉट 6 विकेट केप्ट इंटैक्ट। और निश्चित रूप से दूसरे 4 ओवर में कमबैक करना है तो केएफसी कोडिकल को एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना पड़ेगा। फिलहाल तख्ता इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा का भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को इन बचे हुए 4 ओवर में। Thank you very much, Kobe. And the struggle time which is continuous here from KFC Kodical, the 15 for 4 after completion of 4 overs, but still they got opportunity to back in the game. And batter like Akeem, the very experienced campaigner, have to do the job along with his partner Arif. And wait and see how well these two batters will go in to get that remaining runs. We are just talking about the target. Another 29 runs more required for the victory in the remaining 24 deliveries. Not a big difference. We see that 5 difference. Santosh brought in attack. First ball, lovely delivery. You cannot play that dot ball here onwards. Each and every dot ball, the asking run rate is absolutely creeping here for the team of KFC Kodical. And wait and see again. Santosh will go into ball second time in this over. Right arm over the wicket to the right hand batsman Akeem. The good contest between two very good players in the side. Lovely delivery just coming into the batter. Equally well played there by Akeem. Just allow the ball coming into his bat. It's the wrong one there from Santosh. This time he bowled incoming delivery. Usually he just loves to bowl that leg cutter, but sometimes he just using the condition very well. And of course under flight light is definitely going to be a very effective bowler. 16 for 4. Arif will going to take the strike of the bowling of Santosh. This time wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that properly. Luckily that ball didn't carry it to the wicket keeper Ishad, and both the batters completed a single. Of course the intention of Arif just wanted to get that one into the deep mid wicket or deep square leg to get the distance. But again, because of the against the turn, he just wanted to go for the big shot, didn't got a proper connection. 17 for 4. Another 27 more runs required for the victory. Here is this time he played it nicely, Akeem, but unfortunately didn't find the gap here. Little bit finer, definitely chance here for Akeem to get the boundary. But again, the ball went. It's not an ideal line from Santosh. Of course, it's line which is definitely going to be a punishable from the batters. Akeem didn't got proper connection, otherwise you need to find the ball out of the park. 18 for 4. So a lot of shouting is going on here. Quite understandable that the situation of the game is absolutely electrifying. It's going to be anybody's game. The one proper cricketing stroke can change the complexion of this game. 18 for 4. Santosh again. This time he lofted, but I saw unfortunately he got a distance now. What a save!
What a fantastic save by the fielder. I want to see the Ashwit is the man. He is absolutely a superman for the young friends Urwa. What a fantastic save. Just he's having a jump. Just I want to see in the replay the way that he is having that jump. He's saving the certain six. He's saving a certain six for his team. Unbelievable stop. It's absolutely a superman, I want to tell you. The way that he has got a jump. Just have a look at that on a replay. Of course, his body is in the air, and then after he pushed the ball into the playing area, he went out of the boundary line. It's a great save. Now, if you have got a doubt, umpire Pushpara is saying that yes, we are going to see that in a replay. And needed to be sometime. It's a very, very interesting position of the game. After having a technology which is advanced, why not? We need to see it in the replay. And what a fantastic save, isn't it? Just look at it in the replay. Ball went high up in the air. At one stage, looks like he's Arif. You need to appreciate him the way that he's hit the ball, and he's choosing the longest part of the ground. And what a fantastic jump there from Ashwit. Umpire Nazir of Eden. You will going to see the angle, different angle to watch whether the fielder is has got a jump inside the boundary line. If he is jumped inside the boundary line, no problem whatsoever. Of course, this is not a question where he was landed, but is when he was having a contact. What cricket rule says that your first attempt should be inside the boundary line, and that's what the cricket rules always says. After you and inside the boundary line, and when you are having a contact with the ball, you need to be yes in there, no problem. It's what you call airborne. It's a saved. So third umpire decided it's a saved, perfectly saved by Ashwit. Fantastic save here. Is absolutely that might be the turning point of this match. If the match will go into ended in close encounter, the 2 runs, 3 runs victory, that might be the really is a saving 4 runs for his team. It's 20 for 4. Really. Now 24 more runs required for the victory. Arif, what a strike from him in the previous delivery. Slower one, change of phase, played it single-handed, safe shot down to short. Finally, he wanted to come back for the second. In comes the throw. Chance of run out. And one more wicket is back in the pavilion. Oh my goodness, again the fielder is in the deep. Arshad has been outstanding, and even the Santoshis also did a great job. Just a back and flick into the stump. Arif, the danger man, is back in the pavilion. Not necessary, because Arif is looking so good in the middle. He is connecting the ball very well. He needed to be in the end, and unfortunately he wanted to come back for the second. There will be no chance of second run. The pace is a penalty for that. Hakim is not interested. You know exactly, he is asking for trouble coming to the second. Maybe the reason that Hakim knows that Arif needed till the end, that's why he is not responded. If Hakim will going to respond, then definitely there will be a run out in the strikers and also. This is what sometime he need not throw you a wicket, because you have to keep in mind that presence of the settled batsman is always needed till the end. The presence of a settled batsman always needed till the end if they wanted to win the match. But what a great over. Again, that's a wicket over which is bowled by Santosh, bowled with some maturity. But he is very lucky that he need to say thanks to the fielder Ashwit for saving that 6. Now 21 is the total score. 23 more required for the victory. 3 overs remaining. 18 balls and 23 runs required for the victory. Still the match is not yet over. And new batter in is jersey number 17. Young man Shifaz. He's got opportunity to showcase his talent. Arshad Bajal brought into attack. Starts with the delivery, which is umpire called it wide, rightly so, wide outside the line of off-stamp bonus run. The need to capitalize. 22 for the loss of 5 wicket in the over number 6 is in progress. Arshad again from the BMR group, and left arm round the wicket, bowls, wanted to go for the switch it.
Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Irshad did the rest. That was what actually need to capitalize. After you got a wide, you need to convert a next delivery for the run. Because you got an extra run, you have to capitalize that extra delivery for the run. 22 for the loss of 5 wickets. Another 22 required for the victory. Oh, that will going to be a well capped by the wicket keeper behind the stump by Irshad. Fantastically taken, isn't it? This is really going to be a plus point for young friends who are having Irshad behind the wicket. That was got a deviation in that delivery. And fell well capped by the wicket keeper behind the stump. Back to back 2 dot deliveries after that wide ball by Irshad. Still they have to get another 22 runs to win this match. Again, nicely played it down to deep, long off region for a single. With the addition of that single, Skopan moves on to 23 on the board for the loss of 5 wicket. In the over number 6 is in progress. Yes, 6 is in progress. Another 21 more runs required for the victory. Akeem, this time catch it is a call. The one there in that backup point region, and the fielder Rajesh Hubar is just a little bit the fine third man, so that the ball landed safely. One more addition. With the addition of that single, Skoban was on 24 for the loss of 5 wicket. The over number 6 is in progress. Arshad. Again from the BMR group and left arm around the wicket. Balls, lovely shot just wide of Arshad on his follow through. He tried to stop that one, but got a single for that. With that single, Skoban moves on to 25. Quarter century comes up here for KFC Kodical. So this is turning out to be a very interesting match, interesting semi-final. 19 required. This time again, nicely played it out to mid-wicket region. But again, the placement is not proper. Oh, overthrow, but back up by the fielder. My goodness. At one stage, looks like it's going to be overthrow. The extra run there. Akeem will going to keep the strike for the next over. Over number 6, which is comes to an end after completion of over number 6. Chasing a total score of 44 to win the match. KFC Kodical still there battling in the middle. 26 for the loss of 5 wicket. 2 overs remaining, 12 balls remaining. They have to get another 18 runs to win this match. 12-18. And the 6 difference between run and the ball. What KFC Kodical have to decrease the difference. That's why this over is going to be a very important over. The penultimate over. 9 runs per over, the required run rate. If they at least they manage to get 10 runs in this over, there will be opportunity for KFC Kodical to get that remaining 8 runs in that last over. They can try for that. That's why this is going to be very crucial over from the point of view of both the teams. Young friends Urwa, they wanted to get a good over here. At the same time, KFC Kodical, they have to get productive over. Akeem, the key player for the side of KFC Kodical, experienced campaigner. Wait and see how he's going to face Shanawaz. This time, appeal for leg before wicket. This time, they're going up. Very, very interesting. Pushparaj is absolutely saying that anything has happened here. Umpire having some conversation here. After seeing that the level of confidence there from the wicketkeeper behind the stump, he thought it might be caught behind the wicket. But umpire have to see that whether the ball is got contact with the bat. After bat, then we hit the stump. Now they are going for the third umpire. Because sometimes it's very difficult to say anything in that dismissal. Just wait and see what could be the decision from the third umpire. The umpire have to see that. Third umpire have to see that whether the ball anything bat onto that. Umpire have to see that whether the ball is grounded.
So 26 for the loss of 5 wicket. Some interesting eyes here. And wait and see. It's going to be a very interesting. How to see that umpire? How to see that if the ball is got a contact with the bat, then umpire how to see that whether it's going to be a bat and pad catch. What is appealed by Irshad, and that's what umpire have to clarify. The fantastic tournament is in progress. We are in the last semi-final of this cricket tournament. After that, Torpedoes Khan enters into the finals of KFC Kodical, KFC Champions Trophy. Yes, after the bat ball grounded, then ball hit the boot, so the batter is safe. So that suggestion came from the third umpire. It's very clear, and it's Hakim is safe here. 1 run added to total their run for that, and 27 for the loss of 5 wickets, and still 17 more runs required for the victory. So 11 ball remaining and 17 runs required for the victory. Shahnawaz continues from the ascent end. Shifas, the batter. The young man. This time, again the appeal from behind the wicket, but no damage done, just an excitement. Each and every dot ball will going to create the problem here for KFC Kodical. At least they have to rotate the strike. The playing a dot ball means then the pressure is mounting up. So very important dot ball here from Shahnawaz for young friend Urwa. The 27 for the loss of 5 wicket. This time, appeal is gone. Plum in front of wicket, no doubt at all. Shuffled across the line of the delivery. Tried to hit the ball on the onside region. Ball is absolutely straightening. And Shahnawaz strikes here again for the young friend Urwa. Just have a look at the replay. Absolutely plum in front of wicket, no doubt at all in the mind of Pushparaj. Now the team KFC Kodical are looking in trouble. Still they have to get another 17 runs to win the match. The 10 balls remaining. Ten balls remaining and 17 runs required for the victory. Correction, 9 balls remaining. 9 balls remaining and 17 runs required for the victory. The 3 ball bowled in this over, so that 9 balls remaining. The new batter in is a dangerous batter. Harris, a very brave batter, I want to tell you. Fearless batter. Again, played it nicely. The needed such kind of batter need to be very fearless. How well he managed to handle the pressure when the situation like this. But Hakim is a key man here. And at least one big shot is badly required for the KFC Kodical if they wanted to win the match. 28 for the loss of 6 wicket. Hakim is did many a times for his team in his career whenever the team is required some big shot. But in this condition might be the difficult one, but not impossible in cricket. This time swept the ball, but again straight to the hands of deep square leg. The Hakim is just wanted to get that one very fine. Again, the line of the delivery is not so easy for Hakim to get that one very fine. Only a single. 29 for the loss of 6 wicket. 15 to get from 7 balls.
So things are getting much tougher for the team KFC Kodical. Unless and until if they manage to get one big shot here. Again went for the big swing of the bat. Misses the line completely. You miss high it. Shanawaz once again strikes with an excellent delivery. With the pace. No chance for Aris to get that one into his bat. Misses the line completely. Cleaned him up by the beauty. One more wicket back in the pavilion. Now the KFC Kodical, of course, now standing in the situation where how to do before dive. The do or die situation for the team. 29 for the loss of 7 wickets. 7 overs which is comes to an end. Last over remaining. And they have to get 15 runs to win this match. Of course, in the day match, definitely you can say that there is a possibility. But under floodlight, the 15 runs in last over, definitely is going to be a big ask, but not impossible. It's not impossible in cricket. Why we are telling that is impossible? Because of the nature of the ball, which is soft in the nature. So you needed some timing and power equally if you wanted to get the distance. Hakim, wait and see. The temperament, the technique, everything is tested here of the batter Hakim. How to get that 15 in the last over. Bowler brought into attack. Ashwit. This is a one more challenge for the batter because Ashwit, against Ashwit, getting a 15, definitely it's a big ask but not impossible. From the Manglore end. This time going down the leg side, umpire Roland Pinto. The way that reaction I'm watching of Roland Pinto, straight away is giving warning for bowler that is came right in front of umpire, so that umpire will go into upstairs. So see that whether it is good enough to call the wide or a fair delivery. So umpire just noting in his notebook, saying that this bowler is coming right in front of me. Have a look at that one in the replay. Straight away, the bowler is right in front of umpire. So just wait and see. Well, it's good enough to call the wide or not. Umpire, third umpire here in our commentary box. Nazir of Eden. We're going to get the angles. Of course, sometimes it's a little bit difficult to have to see then 2-3 angles if they wanted to get the right result. Where the ball is pitching and where the ball is landing. And where the wicketkeeper's hand, where he kept the ball. So some difficult angles for the third umpire to take the decision here, whether it's going to be wide or not. Umpire again seeing some different angles to get the best result. That's what the problem sometimes, why the umpires asking the bowlers not to come in front of umpires. And someone will going to blame the umpires why they're not giving the right decision. But the problem here for the umpire is that the some bowlers, they're coming right in front of umpire after delivers the ball. So fair delivery from third umpire decision. It's not a wide. So now the equation, 5 balls remaining and 15 runs required for the victory. Hakim have to deliver one big shot here. Just I want to see the field set where the D fielder, one at long off, which is wide-ish, long on, mid wicket, that is in the cow corner, the fielder at deep mid wicket in front of square. Very interesting, there is no fielder behind the wicket in the deep. All we can see that in front of wicket.
This Hakim wanted to go for the big shot there, wanted to go back for the second here. He just wanted to keep the strike. He want to keep the strike. In comes the throw. And oh, now he's running. But now I want to tell you, there will be a couple of runs. There will be a couple of runs if the striker will going to respond for that, non-striker. But Hakim just wanted to keep the strike in his hand. Even the throw which just came out, that throw which just came from the fielder right into the hands of wicketkeeper. Even the Hakim definitely is a short of crease. That's why his partner is not interested for the second run. He just wanted to save the wicket of Hakim. So now 1 run added. That means another 14 required for the remaining 4 deliveries. Under flood that I already mentioned, it's not an easy game for the batter. Difficult condition for the batter to get a big shots. We have witnessed so many shots, so many six towards the commentary box, but not witnessing many sixes from this end. That shows the difficult condition here for the batter. But Hakim has got a potential of doing the job for his team. Again down the leg side, wicketkeeper behind the stump, a fumble, but a dot ball. Now the 3 balls and 14 runs required for the victory. This is going to be last opportunity in this particular delivery, the match decider delivery. Have to get one big shot, at least the boundary takes a match into last final 2 deliveries. Again wanted to go for the big shot, just a single. Hakim wanted to come back for the second. In comes the throw, run out taken place. So 1 run added. That means that 1 run, will it going to be good enough? 13 required. 2 sixes will going to tie the match, and match will going to take in into the super over. So 1,000 rupees which is announced for the bowler Ashwit by Ravi Shenai from Hyderabad. One of the big supporter and sponsor for young friends Urwa. Ravi Shenai announcing rupees 1,000 for bowler Ashwit. Now 2 balls remaining. 13 required for the victory. This delivery is going to be a decider. At least team wanted to tie the match. Missed it. Bowled him. Cleaned him up. That's it. Now young friends Urwa, they cannot lose this match here onwards. 1 ball, 13 runs required. All out. This is a bundle out. My goodness. The KFC Kodical are bundle out. The victory of 12 runs for the team young friends Urwa. Congratulations. They're through to the finals. And now it's going to be the battle for the title in the mega final. The 2 top teams in the South Kent district. It's one and only Tarparus Khana versus young friends Urwa. It's the mega final will going to commence. And wait and see which team will going to become the champion here of this prestigious KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle, Kodical Friends Circle registered Kodical Manglore. We'll take a short break in our commentary box, and before that is a time to announce the Man of the Match award. The man of the match goes to the bowler who really dismantled the batting department in the early stage of the innings. It's one and only the tall man of young friends Urwa, Rifan,
the man of the match. I request Mr. Rifan, please go to the main stage to collect your man of the match award from our chief guest. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 11:35 ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ BK ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ BK ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ KFC Champions Trophy 2025. I request BK Imtiaz sir, please have the seat in the main stage. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮುನಾಜ್ DXB ಹಾಗೂ ಶೇಕ್ DXB ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮುನಾಜ್ DXB, ಶೇಕ್ DXB and Abdullah. Kindly request you to please go to the main stage. The warm welcome for KFC Champions Trophy 2025. We'll take a short break here, and after a short break, we are back in this mega final of KFC Champions Trophy. The two top teams will go into battle for the title. Young Friends Urwa versus Torpedoes Khana. ಹಾಗೆ ಇಲಿಯಾಸ್ KM ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ KM ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಿಯಾಸ್ KM ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ KM ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಾಜ್ DXB ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಿಜಾಮ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಾಜ್ DXB ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಜಾಮ್ರವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಾಜ್ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ DXB ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಜೀಮ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ DSB. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಕೀಮ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Right, the grand finale match of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025 is now going to start between Young Friends Urwa versus Torpedoes Ghana. The two top teams will clash each other in the mega final, and that final match is now going to commence. The news is here from the center that the captain of Young Friends Urwa, after won the toss, he elected to field first, and because of that, their fielders are now spreading out on the field, and we are just waiting for the openers of Torpedoes Ghana. And two umpires, umpire Roland Pinto and umpire Nazir Eden, walking towards to the mid, and we are just waiting for the first ball of the grand finale of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle, registered in the celebration of their 35 years. They are organizing this fantastic tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025. And we'll be back right after a short break with myself, Gopi, when the final match will going to be. Thank you. So it's exactly 12 a.m. at midnight. And now the final match, grand finale of this prestigious cricket tournament is now going to begin. Bashid and Ashraf comes out to the middle. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings from the commentator box and is Rifwan. And we are just waiting for the first ball of the mega final of this competition. Still some fielding adjustments is going on there. And
Ashraf is now going to face the first ball of the mega final of this tournament. Here he comes. First ball, Rifwan to Ashraf. पहली गेंद लेकर रिफवान इस वक्त अशरफ के लिए तैयार था. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. पहली गेंद इस बार गेंद को पैडल स्वीप कर दिया. खूबसूरती का स्क्वायर लेग पर रन के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर पुल करने में सफल. And that single run brings the run second open for टॉर्पेडोज का. और जहाँ तक सवाल है, यंग फ्रेंड्स उर्वा के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था. फलस्वरूप उनके बल्लेबाज अशरफ टॉर्पेडोज का के आरंभिक बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं पहली गेंद पर. और इस बीच रिफान न गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासिद के लिए. और खासकर बासिद का जहाँ तक सवाल है, इनफॉर्म बल्लेबाज, इस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है. और यहाँ देखना है कि उस सफलता के सिलसिले को क्या वो इस मेगा फाइनल मैच में आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं. और रिफान दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद बासिद के लिए. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 2 रनों पर. 8 ओवर प्रति पारी एज यूजुअल. 8 overs per side to be played in this mega final match. And the first over of their innings is now progressing here. Rifan इस वक्त अशरफ के लिए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार स्लॉग स्वीप शॉट comes into play and he finds the gap as well. This time fantastically struck. Just goes on to the front foot and he just sweeps that one fine, just clearing the field, just took the advantage of the power play and he hit that one pretty hard down to a deep in wicket fence for a boundary. Fantastically struck, came from the bat of Ashraf और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर. और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. और निश्चित रूप से जहां तक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त ज़रूरत है, खासकर पावर प्ले ओवर्स में. और रिफान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद एक बार फिर से स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार बेहतरीन स्टंपिंग. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर इरशाद दिस टाइम. एब्सोल्युटली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही जस्ट फ्लिकिंग द विकेट्स. और जहां तक सवाल है, इस वक्त जश्न मनाते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाड़ी. और इस वक्त जहां तक सवाल है बल्लेबाज अशरफ का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा वो इस वक्त पेविलियन की ओर वापस लौटते. इनफैक्ट इट्स अ ब्रिलियंटली स्टंप्ड मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड दिस स्टंप. दिस इज एन एब्सोल्युटली fantastic piece of stumping made by wicket keeper Irshad. So Ashraf, the man, departs after hitting a boundary. He loses wicket in the next delivery. Stumped brilliantly by wicket keeper of the bowling of Rifwan. The first wicket gone for Torpedoes का night 6 for the loss of 1 wicket. और जहाँ तक इरशाद विकेट कीपर का सवाल, अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपर्सों में से एक वो जाने जाते हैं. और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने स्टंप आउट किया निस्संदेह काबिल तारीफ है. पहला विकेट गिर चुका है. इट्स 6 for 1 in the first over. This is the mega final of this prestigious cricket tournament. KFC Champions Trophy 2025 is now progressing here, which is proudly presented by Kodical Friends Circle registered. And देखते हैं यहाँ पर इस फाइनल मैच के विजेता होने के बाद इस KFC चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन के हकदार कौन सी टीम होती है. यहाँ पर न्यू बैट्समैन शाकिर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार रिफान की गेंदों का. और जहाँ तक सवाल है, रिफान तो अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. रात के 12 बज चुके हैं इस वक्त, लेकिन दर्शकों की तादाद अभी भी काफ़ी मात्रा में इस मैदान के चारों ओवर मौजूद है. और इस वक्त फिर इस मेगा फाइनल का मुआयना यहाँ पर करते हुए और रिफान एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट 100 स्ट्रोक जस्ट आई प्लेड दैट वन गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल. दिस कुड बी ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टेड टू द स्टंप्स. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर, लेकिन शाकिर दौड़े कुछ देरी से, लेकिन भाग्यशाली रहे कि वहाँ पर फील्डर का फेंका गया वह थ्रो स्टंप्सों को यहाँ पर नहीं टकराया. और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन एक रन बल्लेबाज पुल्ड करने में सफल. 7 ऑन द बोर्ड फॉलोइंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और पहला विकेट अशरफ का गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त टॉर्पेडोज के बल्लेबाजों पर दिखाई देता हुआ. जहां तक कमबैक करने का सवाल है, इस वक्त एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की उन्हें सख्त ज़रूरत है. और गेंदबाज इस वक्त रिफान दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अब बासित यहाँ पर सामना करते हुए रिफान की गेंदों का. ये गेंद बासित के लिए ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. Fantastically struck. This time after just shuffling across the line, he just played that wide of the mid-wicket fielder.
and the ball running down to a deep mid wicket fence and finds the gap as well. तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। और देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंटली प्लेड दिस टाइम, जस्ट वाइड ऑफ द मिड विकेट फील्डर, and at last he's got the boundary for that stroke. Fantastic start, except they lost their one wicket. Urwa's Kana made a pretty good start in fact. 11 on the board after completion of first over for losing one wicket. तो अश्वित जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए, अश्वित द न्यूमैन is now going to start the fresh proceedings from that side end. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए इस वक्त शाकिर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। गण्य अतिथियों के सम्मुख में ये फाइनल मैच, मेगा फाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अश्वित अपने ओवर के पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 100 स्ट्रोक खेलना चाहा शाकिर ने, अपील इस वक्त, लेकिन आई थिंक इट माइट बी जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। अपने मन पसंदीदा स्ट्रोक 100 स्ट्रोक इस वक्त खेलना चाहता बल्लेबाज शाकिर ने, लेकिन गेंद उनके पैरों पर टकराई, अपील जरूर हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया कि गेंद शायद लेग स्टंप से बाहर की ओर इस वक्त निकल रही है। तो सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग वन विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाड़ी इस वक्त खड़े हुए और एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज अश्वित की गेंदों का सेकेंड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। Now still 11 on the board for losing one wicket in the over number 2 in progress for Torpedoes Kana। और गेंदबाज इस वक्त अश्वित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार फिर से 100 स्ट्रोक, दिस टाइम रिवर्स शॉट ही प्लेड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और एक रन बल्लेबाज को मिला, इस बीच एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। इट्स 12 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग वन विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो बसीत पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जिस तरीके से चौका उन्होंने झड़ा था, एब्सोल्युटली काबिल तारीफ। अब इस दूसरे पावर प्ले ओवर में देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लंगोन और शायद मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर मौजूद। और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर देखे, फुल टॉस, जस्ट चेंज ऑफ पेस एंड दिस टाइम आई थिंक इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट। जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, ही बाउल्ड, धीमी गेंद करी थी परिवर्तन के तौर पर। इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, गेंद को उछालना चाहा, शायद बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था अंतिम क्षण में, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी इंटेलिजेंटली, चतुरता के साथ इस वक्त गेंदबाजी की थी गेंदबाज अश्वित ने, और आखिरकार इस गेंद पर बल्लेबाज को कोई रन यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। और एक बार फिर से अश्वित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बसीत सामना करते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सी द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और अश्वित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच शाकिर के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, तेजी के साथ गेंद पर लगभग पड़े गेंदबाज, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद इस वक्त फेंकी थी, गेंद को जगह नहीं बना पाया स्ट्रोक्स खेलते समय, और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। The scoreboard stays at 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. This is an absolutely good progressing year, except they lost their 1 wicket. They managed to score 13 runs on the board in the over number 2 in progress. और गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते शाकिर सफल होते हुए, गेंद कौन साइड पर स्वीप करना चाहा, स्टंप से एक्सपोज करते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेने में सफल। बेहतर तरीके से गेंदबाजी की थी अश्वित ने, ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर गेंद दोनों ने फेंकी। और इसी के साथ 2 overs completed, and after 2 overs, still 13 on the board, 1 wicket loss for Torpedoes Kana, still searching for the right track, and still in overall calculation, it's going to be 6 overs remaining in there. 6 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 6 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं।
Grand finale of this prestigious cricket tournament, KFC Champions Trophy 2025 is now progressing, which is proudly presented by Kodical Friend Circle registered. The celebration of their 35 years, they are organizing this fantastic tournament in the name of KFC Champions Trophy 2025 और मेगा फाइनल मैच इस वक्त यहाँ पर प्रगति पर। तो दर्शक देर रात होने के बावजूद इस वक्त मौजूद और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहाँ तक सवाल है, मंगलोर की दो प्रतिष्ठित टीम में प्रेस्टिजियस टीम्स आर क्लैचिंग ईच अदर इन दिस ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC Champions Trophy 2025. The bowler starts afresh proceedings from the commentator box and संतोष सीनियर काफ़ी अनुभवी गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त बासित। हालांकि 2 ओवर के पूर्ण होने के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद। निश्चित रूप से कम बैक करना इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा को तो कम से कम चंद विकेटों की इस वक्त सख्त जरूरत, खासकर बासित का विकेट उनके लिए काफ़ी कीमती बेशकीमती इस वक्त साबित होगा अगर वो विकेट प्राप्त करेंगे। और जहां तक सवाल है टॉर्पेडो स्काना का, तो बासित की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। संतोष पहली गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया सेंसिबली, ही प्लेड दैट वन और बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर जस्ट सिंगल गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। और इस बीच संतोष अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, शाकिर सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को 1-handed स्ट्रोक खेलना चाहता। द बॉल गेट्स एन एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। So the equal battle is now continuing here. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इस वक्त गेंदबाज संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। शाकिर के लिए जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड। परफेक्ट ऑफ कटर फ्रॉम द बॉलर संतोष और दर्शक यहाँ पर तालियों के साथ उनका अभिवादन करते हुए। निश्चित रूप से ऑफ कटर उन्होंने फेंकी थी, पिच राइट ऑन द लाइन एंड निप बैक अ लिटिल बिट इन द लास्ट मोमेंट और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची, विकेट कीपर के हाथों में रन्स नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी संतोष की अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त संतोष गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ स्वीप शॉट, नॉट सक्सीडेड और गेंद पैरों पर जरूर टकराई, लेग बाय का इशारा। 1 run added to the total in the face of extras and with that single run the scoreboard moving up to 15। 15 रन बन चुके हैं जबकि तीसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो संतोष गेंदबाजी करेंगे बासित के लिए। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ संतोष बासित के लिए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद हवे में जरूर लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। और जब तक विकेट कीपर इरशाद अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। संतोश अगली गेंद, रिवर्स शॉट, improvisation, this time he finds the gap as well, it might be a cut of just inside the fence। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। couple of runs to end the over number 3 of their innings and 3 gone and after 3 overs still the equal battle is now continuing here. It's 18 for 1 after completion of 3 overs with 5 to go in their innings. Now the bowler brought into the attack is Arshad Bajal और उनके अनुभवी गेंदबाज, अनुभवी खिलाड़ी कहा जा सकता है यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, जबकि डीप कवर पॉइंट और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम अरशद बजाल, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, In fact, he's got a single for that stroke और 1 रन के साथ बस स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 19 रनों पर 19 on the board for losing 1 wicket at the start of the 4th over in fact। और अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा विकेट कीपर इरशाद अपील करते हुए कि जानबूझकर शायद शाकिर ने यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा शाकिर दौड़ पड़े थे, हड़बड़ाहट में गेंद के पैरों पर टकराने के बाद कुछ उस तरफ गई थी, तो अंपायर ने कहा जी नहीं, यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर शाकिर दौड़े थे, तो 1 रन का इजाफा, 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। और यहाँ पर जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस वक्त गेंदबाज अरशद बजाल अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड वाइड, डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और इस बीच दिशाहीन गेंद भेजी थी इस वक्त लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए। 21 ऑन द बोर्ड। गण्य अतिथि इस वक्त हमारे साथ इस कमेंटेटर बॉक्स में विराजमान है, उनके साथ इस मैच का, इस फाइनल मैच का वो मुआयना करते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड बाय बासित, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट सिर्फ 1 रन मात्र मिलेगा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गुड पिच ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर अर्शद, अब तक बेहतर गेंदबाजी इस ओवर में उन्होंने की है, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर के लिए 100 स्ट्रोक, वंस अगेन ट्राइंग टू प्ले दैट वन विद अ 100 स्ट्रोक, दिस टाइम ही सक्सीडेड एंड इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 4 in progress. Still couple of balls left in this over, और अर्शद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बासित 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड बैन, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट, और इस वक्त मिड विकेट को थोड़ा सा स्ट्राइटर इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए। अर्शद की गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला मिड ऑन की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 1 रन तेजी के साथ पूर्ण कर चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर, 24 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर टोर्पेडोज काना, और इस बीच अर्शद अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद एक बार फिर से 100 स्ट्रोक एंड ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द शॉर्ट फाइन लेग फील्डर अजमल, दिस इज एन स्टनर, एब्सोल्युटली स्टनर, 100 स्ट्रोक इस वक्त खेला था, और गेंद जिस तरीके से हवा में उछली और जिस तरीके से अजमल ने इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लिया, निस्संदेह काबिल तारीफ है। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, आगे गए 100 स्ट्रोक एंड दिस टाइम इट्स टेकन, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्टनर, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट कैच टेकन बाय द फील्डर, और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए शायद इस वक्त रिव्यू लिया गया है, लेकिन कुछ भी रहे, कैच हो या ना हो, यहाँ पर फील्डर ने गेंद को बेहतरीन तरीके से लपका है अजमल ने। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त ओवर यहाँ पर शाकिर को जाना होगा, he has to go at this situation and a fine catch taken by Ajmal at short fine leg, so 4 overs completed, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 4 and after completion of 4 overs 24 for the loss of 2 wickets, still have to go in, that means 4 overs left, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में और कितने रन यहाँ पर टोर्पेडोज काना के बल्लेबाज बटोर पाते। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को यहाँ पर अंतिम 4 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सतीश। So 4 overs completed, 24 on the board. Satish, equal battle is now continuing in the first 4 overs. We are expecting some fantastic battle in the next 4. और जहाँ तक सवाल है, एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तो कम से कम 50 के आंकड़े को पार करना होगा यहाँ पर टोर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को, क्योंकि यंग फ्रेंड्स उर्वा के पास जो बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है उस पर दबाव डालना है, तो कम से कम दे हैव टू क्रॉस द मार्क ऑफ 50। और देखते हैं यहाँ पर टोर्पेडोज काना के बल्लेबाज 50 के आंकड़े को पार कर पाते हैं नहीं। आगे का को देखा सुना के लिए माइक्रोफोन पर आइए सतीश। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The equal battle is on between 2 very good teams in the South Kenda district. Of course, both the teams has got a fantastic season in the 24-25, and the battle is on for this prestigious tournament. Lovely delivery to start with, and Shanawaz is operated from the commentary box end, and the first delivery itself, it's right on the money, right on the target. And last moment, the batter has got a bat onto that, so that he just survived from leg before wicket decision. No appeal came from bowler, quite understandable. He's got a bat onto that. Tanveer is a new batter in, will go into face the next delivery. Improvisation, pedal that one down to a square leg region for a single. With a single scoreboard moves on to 26 for the loss of 2 wicket. Each and every run going to be very crucial, because under floodlight, of course, everybody knows how difficult condition for the batter to bat on.
And 50 plus runs definitely going to be a psychological advantage for the team when they're going to depend the total. Here is again right arm over the wicket. Nicely driven. The batter, of course, captain of the side, again leading from the front. Bashid, what a tournament is what a tournament is having from the bat. Is absolutely the played captain knocks each and every matches. The leading from the front, taking the responsibility in his shoulder. And oh, lovely improvisation, just a delicate touch, there from Tanvir. Outstanding, minimum effort and maximum result. Just have a look at it in replay, the way that Tanvir is getting that one, fantastic, isn't it? Just an improvisation. This is what the cricket is all about. Sometime using your brain is so important. Of course, in this condition, Tanvir knows that getting a big shot, hitting the ball out of the park, it's not a joke. It's just to have some intelligent cricket, what is implemented here to get that boundary. 31 for the loss of 2 wickets. Nicely done, just wide of that cow point fielder. Excellent piece of fielding there by Santosh. Again, age is just a number. Way that is committed for that fielding has been outstanding. One more single, 32 for the loss of 2 wickets. Over number 5 is in progress. This is turning out to be a good over from the point of view of Torpedoes Khana. Oh, lovely delivery coming into the batter, just following the batter. And Shanawaz knows that the batter is playing for the inside-out cricketing stroke. So this is turning out to be a good over for the point of view of Torpedoes Khana. How many runs scored in this over? Our scorer and statistician, Ratish Raj, absolutely is a busy customer in our commentary box. 9 runs came from this over. This is what you're watching in our screen. There's a Champions Trophy, the KFC Champions Trophy. The dream of these two teams to lift that, the big one, not a small one. And of course, everybody knows that we are inching towards the end of the season 24-25. This is one of the most prestigious cricket tournament. Both the teams wanted to become a champion here. So compared to the performance in this particular season between these two teams, of course, Torpedoes Khana, the leading from the front. This is their 8th final after their becoming the 5 times champion, 2 runner-up trophies in this tournament. And now this is 8th final entry for Torpedoes Khana. Definitely this is a fantastic season for the Torpedoes Khana. Even Young Friends also, they're in a 2nd place. They might be the 5th entry for the final for Young Friends Urwa. Outside the line of off time, played it down to deep extra cover region for a single. With the addition of that single, scored the moves on to 34 for the loss of 2 wickets in the over number 6 is in progress. The man with the golden arm, Arshad Bajal, is brought into attack from the far end, from the BMR group end. And Tanvir will go in to take the strike. Oh, what a delivery. Fantastic one. Appeal for leg before wicket. Umpire Roland Pinto is saying that ball is missing the leg stump because of the turn of the ball might be. Have a look at the confidence of the bowler. Arshad thought he got a wicket of Tanvir. Even Ishad is also thought he's got a wicket. And a ball definitely maybe has got a little bit extra turn, a deviation. What Arshad sometimes is getting some extra turn. That might be sometime the problem for the umpire to give the leg before wicket because ball is doing too much. 35 for the loss of 2 wickets. Here again. Loved it. Bashid. The Bashid. He's just taking the aerial route and he got the distance as well. What a fantastic strike. Absolutely nailed it. What we are talking about, a very difficult condition for the batter to bat on in this condition under floodlight, but not for the Bashid. He is the man, absolutely having a fantastic season from the bat. And definitely in this KFC Champions Trophy is a big contender for the best batter of the tournament. Each and every matches being the captain of the side, leading from the front. What an innings he is playing. Outstanding. And hitting the bowling of Arshad Bajal is not a joke. Right from the middle of the bat. And scoreboard jumps into 41 for the loss of 2 wickets. This time good comeback here by Arshad after that delivery which is bowled in the slot. Learning from the mistake. You know exactly what Bashid will going to do here. He is in aggressive frame of mind. Wanted to give the finishing touch for the innings. Appeal. Umpire says not out.
Half-hearted shout. No run scored. 41 for the loss of 2 wicket. You're watching the mega final of KFC Champions Trophy 2025, which is proudly presented by Kodical Friends Circle, registered as they are celebrating their 35 years of journey in the field of cricket. Nice looking drive. Sensible batting there from Tanvir. He is absolutely playing a supporting role in other end, rotating the strike. One more productive over for the point of view of Torpedoes Khana, which is comes to an end. After completion of over number 6 is 42 for the loss of 2 wicket. Another 2 overs remaining, and wait and see how many runs the team Torpedoes Khana will going to get here. But I think definitely it's going to be a danger sign for the young friends Urwa, because 42 in 6, at a rate of 7 runs per over, another 14 runs here on odds, that the team total which is takes into 56. And once I've already mentioned that once it's going to be a 50 plus, definitely going to be not an easy condition for the batter to chase down. Of course, young friends Urwa has got some formidable batting depth lineup in their side, just like Arshad Bajal, the man in form, Sajid, they can Irshad, Ajmal. Of course, they're also got some big name in their batting department, but the 50 plus always going to be a good score to depend in this condition. So this is a 2 overs. I think it's going to be a very crucial from the point of view of team young friends Urwa. They have to get 2 good overs here if they wanted to restrict them under 50 or under 55. Now, no change in bowling. Shanawaz brought into attack to bowl penultimate over, 7th over of the innings of Torpedoes Khana. And for Vasit, a deep square like mid-wicket and long on, long off, and one fielder deep backward point. This time opportunity is missed out by wicket-keeper Irshad. Definitely it's a go opportunity. Then maybe that ball is just passing between his bat and pad. It's not easy for the wicket-keeper when the ball is almost, just I want to see the replay. And of course that ball is just bent between bat and pad, and wicket-keeper behind the stump fumbled and no run scored. Swept the ball. Satan and Ajmal. Chance of run out. Oh my goodness. Look at the effort there from Ajmal. Even though he misses the stumps, he's a no-striker's end. But you need to appreciate the effort of Ajmal. And ball just misses the stump, and batter Bashid survives. Just have a look at the replay. Absolutely fantastic commitment here from the fielder. 43 for the loss of 2 wicket. Driven. Lovely. Oh, now the appeal is going on. Now appeal is going on. And just I want to say that something is happened here. The bowler's back drive, and the ball is touches the boot or some part of his body, and then ball fell into the stumps. And at that time I think Bashid is out of the crease. Quite unusual dismissal here for Bashid, because this is definitely going to be an unlucky dismissal, I want to say. The way that batter, have a look at the replay. He's tried to stop the ball from his right leg, and ball might be that touches his boot and then went into the stump. That time Bashid is out of his crease. So what an innings he played here. Definitely he will going to get a standing ovation from the dugouts of their teammates. The way that he's played the innings of his captain's knock, I want to tell you. The captain's knock, which is comes to an end with the run out. Once again he scored 22 valuable runs. Almost 50% of the total score, which is came from the bat of the captain. 43 for the loss of 3 wicket. The new batter in. One more good striker of the ball. Of course, the perfect batter to have to deal with the slog overs. Sinan, the batter, will be the non-striker. Now Tanvir will going to take the strike. Shanawaz. Again, chance of run out. Shanawaz fails to get the ball on his follow through, leg by call by umpire. 44 for the loss of 3 wicket. The late night time is exactly 12 past 30. But have a look at the crowd here. Absolutely fantastic, isn't it? Even though it's a late night, they're absolutely enjoying the game of cricket. The mega final between 2 very good teams. Appeal for leg before wicket. He's raising his finger. He's gone. Sinan back in the pavilion. Confident appeal coming from the bowler Shanawaz. This time Sinan just wanted to play that unorthodox reverse sweep. The ball is almost straightening with the pace.
Just I want to see it in replay. The ball is hit him on the back foot, and that time, of course, the back foot right in front of midland leg stump is back in the pavilion. Important wicket for young friend Urwa. Just what I'm talking about. Young friend Urwa have to bounce back strongly in that 2 overs, and they got wickets here. Just have a look at the replay again. Oh, that was absolutely hitting him on the back foot. 1 foot which is out of the stump, the impact which is outside the line of off stump, but back foot we can see the absolute right in front of a stump. 44 for 4. The new batter in Imtiaz. No, it's a Harris. The last delivery of the over. This is turning out to be a great over. Oh, bowled him, clean him up. Clean him up. Of course, he drags it. He drags it into the stump. Tried to drive the ball against the spin. Maybe the ball has got the under edge of the bat and then fell into the stumps. The back-to-back 2 wickets here for Shahnawaz and young friends Urwa. They're strongly back in the game with that over. At one stage, team Torpedoes Khan, I already mentioned, they're cruising towards almost at least the 60 runs. But now, because of that great over, just 2 runs and 2 wickets. The good stuff there from Shahnawaz. Now last over remaining in the innings of Torpedoes Khan. The new batter in is a little master, Aman Osangadi. Man who takes his team successfully into the final and becomes the champion at Mudabidri MSC Trophy, representing for FCT Puttige. Now he's got opportunity to perform in the Torpedoes Khan because yes, the way that he's taken his team into the final has been outstanding. And in the final, he's defeated the same team, Torpedoes Khan. Now Torpedoes Khan having that same captain in their side to perform. That shows how important to have a player like Aman Osangadi in the team. A very good outfielder, good bowler and good batter. Nicely played it down to deep cow point region for a single. With the addition of that single, score moves on to 45 for the loss of 5 wicket. Last 5 deliveries remaining. Ashwit from the BMR group end. Pass umpire Roland Pinto swept the ball nicely down to fine leg region. They wanted to come back because they get Sinan is a good runner between the wicket. In comes the throw, and have a look at the running between the wicket. That's why the Torpedoes Khan wanted this man in the team. That athleticism what he has got. Fantastic running between the wicket, converting single into 2. With that couple of runs, Coburn moves on to 47 for the loss of 5 wicket. Now 4 balls remaining. Torpedoes Khan knows that they are playing one of the formidable batting department of young friends Urwa. Any score less than 55, it's not good enough to win the match. This time bowled him, cleaned him up. Aman just wanted to go for the reverse sweep. Misses the line completely. Ball hits the half stump of him. Ashwit strikes. Ashwit strikes with an excellent delivery, where Aman wanted to go for the reverse sweep but fails to make a contact with the bat. He departs. The wicket number 6 is back in the pavilion. It's 47 for the loss of 6 wicket. The last over is in progress. Appeal for leg before wicket, and umpire says not all. Leg by call by umpire. One more addition. 48 for the loss of 6 wicket.
So last two deliveries left in the innings of Torpedoes Khana. 48, just too short of the 50. Akram is a new batter in. He's a non-striker. Tanveer. The last 10 deliveries, Torpedoes Khana scored only 6 runs. Oh, this time, I don't know how the ball is coming from the hands of Ashwit, but here is a stump out which is made by the wicketkeeper behind the stump. Now it's going to be more interesting because it's not deliberately bowled. Maybe the ball is just slipped out of the hands of the bowler. Have a look at it in replay. Just went for the slash. Now umpire, I think Roland Pinto, they're having some word with the batters. Now it's all up to the field umpires. If they're having any doubt in the mind, they can ask for the third umpire. It's not the batters. Now it's a third umpire. He's been asked to see whether it's a no ball or not. They have to see whether the no ball or not. Umpire Pushparaj have to see. The ball is absolutely dropping. It's a fair delivery. It's a fair delivery. Rightly so, because even though looks like the Ashwit, the ball which is might be slipped out of his hand, but unfortunately Tanveer is back in the pavilion. He is surprised with that ball. He thought, that's really happening? He couldn't manage to judge that slow, full toss came from the hands of Ashwit. Misses the line completely out of the crease and wicketkeeper behind the stump complete the job. It's 48 for the loss of 7 wickets. Tanveer departs after played a good innings. He scored 8 runs in 7 balls. Then Chetan. Now in some excitement coming in the crowds. I don't know for what the reason. Some fun thing is happening in spectators gallery. Some excitement. Both the teams has got their own supporters behind. It might be the supporters of Tanveer, the local boy. Some supporters coming from Kudroli. They are acknowledging. So last delivery of the innings of Torpedoes Khana. And Chetan will going to take the strike. One more good over is in progress from the point of view of young friends Urwa. What an outstanding comeback. Especially the last 3 overs. Absolutely a great one for young friends Urwa. Oh, now it's going to be a bonus. Now it's going to be a bonus. Ashwit did a really little bit nervousness. 50 comes up here for Torpedoes Khana. What we are talking about, the psychological advantage. Now they got a 50. The 50 they got now. Last ball of their innings. Akram, the good striker of the ball, just wanted to finish off the things with a big shot and wait and see. This time, what we're talking about, he wanted to finish off the things a big shot, but couldn't manage to get the distance. He got the elevation, but fails to get the distance. And fielder in the deep mid wicket, Rifan takes a catch. That's the end of Torpedoes Khana's innings. Their 8 overs completed. They scored 50. They lost 8 wickets, and they set a target of 51 to win the match for young friends Urwa. The great comeback by the bowlers of young friends Urwa. At one stage, one stage they scored a 40 runs in 6 overs, and all in sudden now they are finished their innings with a 50 for 8 and 51, the target which is set for young friends Urwa to lift the prestigious KFC Champions Trophy to 2025. And we'll take a short break in our commentary box, and after a short break we are back with
my friend Mr. Gopi to take over the microphone. Final time today in this prestigious KFC Champions Trophy 2025. Welcome back for the innings of young friend Urwa, and 51 is a target which is set by Torpedoes Khana for young friend Urwa to lift this prestigious title, KFC Champions Trophy 2025. And before we're going to hand over the microphone to Gopi. Gopi, 51 is a target, and at one stage, Torpedoes Khana, when Captain Bashid is batting in the middle, looks like it's going to be a 60 plus target will going to be set by that team. And some excitement is going on in the ground. Someone from the crowd is walking towards Arshad Bajal's fan taking a selfie. Oh my goodness. This is what the popularity of Underarm cricket is all about. He's a must play, the very happiest boy in the world. Having a selfie with Arshad Bajal. Of course, so many having so many fans following Arshad Bajal. Gopi, coming back to this match, the final 51 is a target and seems to be a 51 the competitive total. You cannot underestimate this total 50 underflated. But one stage they're cruising towards 60 plus runs on the board, and young friends Urwa, after in the last 2 overs they bounced back very well. They restricted them for the 50 and 51, which is a target. And now Gopi, I think we are just waiting for the equal battle from these two very good teams in the particular season. Of course, Torpedoes Khana, absolutely they are leading from the front. They're playing their 8 finals, and even young friends also, they played a fantastic game of cricket in the particular season. But anything, Gopi, this is a KFC Champions Trophy. Maybe that it was the biggest tournament of the season, and definitely these two teams will going to battle hard for the victory in this KFC Champions Trophy 2025. It's over to Gopi. Thank you.
एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त दिस कुड बी द लास्ट बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द सीजन और निश्चित रूप से दोनों टीमों ने इस वक्त कड़ी मेहनत उन्हें करनी होगी यहाँ पर इस श्रृंखला का चैंपियन बनने के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त अरशद बजाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, तो इस बीच पहली गेंद चेतन की गेंद, इस बार अरशद बजाल के लिए गेंद लगोन से सीमा रेखा के अंदर लपक लिया गया है, ऐसा कहना पड़ेगा, रोक दिया गया है वहां पर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सेव मेड बाय द लगोन फील्डर एंड व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रोक फ्रॉम अरशद बजाल। लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग वहां पर अमन जो फील्डर थे लगोन पर, अमन होसंगड़ी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका इस वक्त। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग came from the fielder Amman, and because of the he restricted the batsman foot to take only in a single. Have a look at this in the replay. This is an absolutely certain six. लेकिन जिस तरीके से अमन ने इस गेंद को सेव किया है काबिल तरफ है, and this is an outstanding save. This is a magnificent save made by the long on fielder Aman. तो जहां तक सवाल है चेतन और शाकिर के लिए 1000 रुपए का नकद पुरस्कार रखा गया है इस वक्त। तो इस वक्त चेतन और शाकिर की गेंद पर अगर अरशद बजाल छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार बचपे कलंदर दुबई इनकी ओर से दिया जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर, हालांकि 1000 रुपया मिल सकता था, इस वक्त मिलते मिलते बच गए यहाँ पर लंगोन पर सीमा रेखा पर बेहतर तरीके से जो गेंद को रोका गया था। और इस बीच जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त साजिद, इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त चढ़ती हुई। अरशद बजाल कुछ हद तक बातचीत करते हुए दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स इस वक्त मैदान के चारों ओर मौजूद। हालांकि इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम, बिल्कुल मैदान खचाखच दर्शकों से इस वक्त भर चुका है। और दोनों टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर। साजिद सामना करते हुए इस वक्त चेतन की गेंदों का, और चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद इस वक्त सामना करते हुए चेतन की गेंदों का, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट साजिद के लिए रिवर्स शॉट गेंद, ओह इस बार दिस कुड बी इन ट्रबल एंड दिस टाइम डायरेक्टली शाइन्स एट द विकेट एंड अप गोस द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर। तो साजिद की खुद की गलती थी और यहाँ पर वो अपना भुगतान कर बैठे, 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वापस लौटकर अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रखे, सीधा थ्रो विकेट कीपर का फेंका गया हुआ, स्टंप्सों को बिखर कर ले जाता हुआ। और साजिद इस वक्त अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर हिम, और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा अपना पहला विकेट खो चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था, और स्क्वायर लेग अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। First wicket fallen, it's 1 for 1 in the first over for young friends. 51 the target. In 8 overs they have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.38 runs per over they have to score for victory at the beginning of their innings. और अब 1 रन पर पहला विकेट गिर चुका है। अब निश्चित रूप से कुछ हद तक दबाव यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज के ऊपर। तो यहाँ पर नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, अजीम। तो अरशद अगर मैच को जिताते हैं तो बॉस कुतरोली इनकी ओर से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो अरशद के लिए इनामों का बौछार यहां पर लगाया जा रहा है। और इस बीच नए बल्लेबाज अजीम सामना करने के लिए तैयार, और चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से एक हाई वोल्टेज मैच है इस वक्त, एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ, और दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स मैदान पर इस वक्त मौजूद। चारों ओर अपनी टीम के मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ ये गेंद चेतन की गेंद ड्राइव किया इस वक्त बीट करते हुए चेतन को निकली मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को मिड ऑफ पर फील्ड कर लिया जाता, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 2 रनों पर 2 ऑन द बोर्ड। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, और 1 विकेट इस वक्त साजिद का गिर चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त चेतन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और अरशद बजाल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। जैसा कि पहले ही इनाम घोषित किया गया है, अगर चेतन और शाकिर की गेंद पर अरशद बजाल छक्का लगाते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार 1000 रुपीज विल रिवॉर्डेड फॉर अरशद इफ ही हिट अ 6 इन द बॉलिंग ऑफ चेतन एंड शाकिर। और जहां तक सवाल है इस वक्त, एक और सपोर्टर देखिए यहाँ पर तबका दिखाया जा रहा है उनके पारी की शुरुआत से पहले, जिन्होंने इस वक्त दौड़ कर आई और अरशद बजाल के साथ इस वक्त सेल्फी ली थी उन्होंने। तो शायद मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया अरशद बजाल के सबसे बड़े फैन है वो, और निश्चित रूप से अरशद बजाल के हज़ारों फैंस हैं। और ये बात यह दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट के खिलाड़ी कितनी मशहूर हो चुके हैं अब तक आज की तारीख में सोशल मीडिया की ओर से। इस बार दिस टाइम इज गोल्डन वन, आई थिंक इट्स टू बी टेकन, नो इट वोंट, एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बिग हिट। In fact, I think
इज गॉट अ ब्लो ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट फॉर द फील्डर, लेकिन एक जीतोड़ कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जो फील्डर थे लॉन्ग ऑन पर अमन होसंगड़ी, जिन्होंने 2 गेंद पहले बेहतरीन तरीके से गेंद को सेव किया था, बचाया था, लेकिन इस बार गेंद को वो रोकने में असफल और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक। और देखिए यहाँ पर किस तरह have a look at this the replay. This is an absolutely outstanding effort made by the long on fielder, but he won't get that one. और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त छक्के के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ अरशद बजाल ने, और 1000 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर अरशद बजाल प्राप्त कर चुके हैं इस छक्के के लिए, जो कि बचपे कलंदर ने घोषित किया, बचपे कलंदर दुबई ने घोषित किया है। और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अब चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अरशद एक छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद बजाल के लिए अगली गेंद। दाहिने हाथ राउंड द विकेट कुछ हद तक 2 से 3 कदम उनका रनअप, और रनअप में कुछ हद तक वो रुकते हैं और उसके बाद गेंदबाजी करते हैं। और ये गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट फेंके गए। अरशद के लिए गेंद को उछालना चाहा इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से जहां तक 51 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत। और साजिद का विकेट पहला ओवर में गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव उनके ऊपर दिखाई देता है, लेकिन अरशद बजाल वो दबाव को काफी हद तक हटा चुके हैं छक्का लगाने के बाद। अब सामना करते हुए आजीम, जबकि चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेलना चाहा, शॉट स्क्वायर लेग पर बासी तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट, दैट मींस 51 minus 10, 41 more runs now they have to score for victory in their रिमाइनिंग 42 डेज। और सतीश, पहला ओवर साजिद का विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद अरशद बजाल ने जो छक्का लगाया, काबिल तारीफ छक्का, और उस छक्के की बदौलत 1 विकेट खोने के बावजूद ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत कर चुका है। Exactly, Gopi. And the first thing what happened in the first over is that losing Sajid, the informed batter, and for young friends Urwa, and definitely it's going to be a big blow. And it looks like it's going to be for the team of Tarpaduskana. They are strongly back in the game by picking up Sajid's wicket. But after that, the way that Arshad Bajal, of course, 1 6 is saved. Otherwise, different story, a different scoreboard. But that was a great save there by Aman Osagani. But after that, he hit 1 more 6, Gopi. This is what the potential of Arshad Bajal. He's absolutely not looking at the situation of the game. But you know exactly, you have to take the advantage of the power play, and that was what he wanted to do to get that 51 to win the match, win the tournament. Exactly, सतीश। और यहाँ पर अरशद बजाल के दिमाग में कुछ और बात इस वक्त दौड़ रही है कि किस तरीके से अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचाया जाए। हालांकि पिछले मैच में डिफेंसिव बल्लेबाजी की थी अरशद बजाल ने, लेकिन इस मैच पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर वो हावी हो चुके हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी अपनाते हुए। तो यहाँ पर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज शरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और आजिम इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट शरण की पहली गेंद आजिम के लिए हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। आजिम जानते हैं इस वक्त जितना ज्यादा स्ट्राइक्स अरशद बजाल को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा, तो हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। अब अरशद बजाल बैक ऑन स्ट्राइक, 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। एक्जैक्टली 40 रन रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 41 डिलीवर्स। द प्रेजेंट इक्वेशन स्टैंड्स फॉर द बैटिंग साइड यंग फ्रेंड्स उर्वा। और इस बीच अरशद बजाल सामना करने के लिए तैयार है, और देखते हैं यहाँ पर अरशद बजाल पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए गेंदबाज शरण किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त शरण। अरशद बजाल इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपने हाथों को जमीन पर घिसने के बाद अब सामना करने के लिए तैयार। केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और 7 खिलाड़ी इस वक्त पावर प्ले के अंतर्गत 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। और इस बीच गेंदबाज शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल के लिए यह गेंद। इस बार अरशद बजाल ने गेंद को उछालना चाहा, बल्ले के अंदरूनी किनारे शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पर, इस बार थ्रो कहां पर फेंकी थी और कहां पर गई है इस वक्त। कवर पॉइंट पर थ्रो पहुंची इस वक्त, फेंकना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और
जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1। और यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके का थ्रो था और शायद गेंद उनके हाथों से फिसल गए थे। द बॉल वाज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स और इसकी वजह से बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 12 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अजीम इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज शरण फेंक चुके हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट आजिम के लिए गेंदबाजी करते हुए गेंद आजिम के लिए ड्राइव कर दिया। इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर थोड़ी से सीधे तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हर्षद बजाल काफी तेज और 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। Absolutely fantastic running between the wicket between these two batsmen. They completed a first run very fast and come back for the second run very safely in the end. 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. और 20 गज के दायरे के अंदर फील्डिंग का नजरिया। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉट थर्ड मैन गली कहना पड़ेगा, शॉट फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शरण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार आजिम के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, ओह फैंटास्टिक, दिस इज आउटस्टैंडिंग लेग कटर। गेंद इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके गेंद के टर्न को भाप नहीं पाए और गेंद अंतिम क्षण में कुछ हद तक घुमाव लेती हुई, टर्न लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन गेंद शरण की और इस गेंद पर बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं मिला। 14 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। शरण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आजिम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद आजिम के लिए ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। फैंटास्टिक ओवर, दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन टॉर्पेडोज कॉर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट 4 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर और 5 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं शरण और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए। तो यहाँ पर टॉर्पेडोज कॉर्नर की गेंदबाज शरण का इंटेंशन यहाँ पर उनका इरादा यह था कि अरशद बजाल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ना मिले, तो यहाँ पर अपने इरादे में काफ़ी हद तक वो यश यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। और इस बीच इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज शरण आजिम के लिए। बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए, दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच भर चुका है, एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम। और इस बीच शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार आजिम के लिए। यह गेंद उछालना चाहते, थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, शॉट थर्ड मैन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 5 रन केम फ्रॉम दिस ओवर और सतीश बेहतर ओवर, गुड ओवर केम टू एंड 5 रन जस्ट केम फ्रॉम दिस ओवर। और शरण ने अंडर प्रेशर, स्पेशली पावर प्ले ओवर्स में अरशद बजाल जैसे बल्लेबाजों को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, खासकर आजिम जैसे भी बल्लेबाज। और यहाँ पर 5 रन उन्होंने अंडर प्रेशर इस पावर प्ले ओवर में दी है। मैं समझता हूँ एक बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में शरण ने की है, अंडर पावर प्ले। Exactly, Gopi. The fantastic over which is completed by Sharan. The bowler is in excellent form. And the last tournament which is played at MSC Trophy also, he bowled fantastically for the team Torpedoes Kana. Whenever the team is required some restriction, he is absolutely leading from the front, and he got a best bowler award as well in that MSC Trophy 2025. And even in the JD Champions Trophy, which is played at SVS Stadium at Bantwal, Gopi. In that particular tournament also, Sharan is bowled fantastically. So this is what the captain actually needed from him. He needed some restriction in the second over of the power play. And now, Gopi, 7.5 runs per over, 15 in 1. Still the match is evenly poised. बिल्कुल सतीश, इस बार हल्के से पुश कर दिया इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में। शाकिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके और 4 के व्यूअर्स इस वक्त यूट्यूब पर मुआयना करते हुए देश विदेश में, जो कि बेद्रा मीडिया इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। और निश्चित रूप से एक फैंटास्टिक एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट जनाब इरफान इनके सारथी इस वक्त बेद्रा मीडिया करता हुआ। और व्यूअर्स 4 के व्यूअर्स इस वक्त 4 के व्यूअर्स आर वाचिंग दिस टूर्नामेंट ऑन यूट्यूब व्हिच इज टेलीकास्टेड बाय Bedra Media under the great leadership of Mr. इरफान। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 1 रन का, तो 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं अरशद बजाल। और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए यह गेंद, इस बार अरशद के लिए ड्राइव कर दिया गेंद को, इस वक्त अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, इस वक्त अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज अजीम ने। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 17 ऑन द बोर्ड
the over number 3 in progress. Still the match is now equally balanced और गेंदबाज शकीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड. दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग अंडर प्रेशर और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और इस बीच शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, हल्के से गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया. गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा. 19 ऑन द बोर्ड और लेग बाय का इशारा. एक और बेहतर ओवर साबित होता हुआ अगर टॉर्पेडो उस्काना के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि शाकिर इस वक्त करते हुए. और अरशद बजाल काफ़ी देर से छक्का लगाने के बाद आक्रामक स्ट्रोक का प्रयास हो कर रहे हैं लेकिन सफलता उसके बाद उनके हाथों में नहीं आई है. और शकीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट अरशद के लिए. यह गेंद उछालना चाहे एक बार फिर से चूके. फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट स्लोवर लेग कटर. गेंद कौन साइड पर उछालने के प्रयास में चुके और गेंद शायद लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंची और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. फैंटास्टिक ओवर प्रोग्रेसिंग गियर फ्रॉम शाकिर. और अरशद बजाल इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार शाकिर की गेंदों का. और यहाँ पर रन से जो चाहिए कुल मिलाकर 32 गेंदें बाकी हैं. 32 बॉल्स लेफ्ट एंड 32 रन्स मोर रिक्वायर्ड इन फैक्ट फॉर विक्ट्री फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा. और इस बीच ये गेंद अरशद बजाल के लिए स्वीप करना चाहा. गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा जरूर. शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है. लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. व्हाट अ फैंटास्टिक मेगा फाइनल मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर under this prestigious cricket tournament KFC Champions Trophy 2025 which is proudly presented by Kodical Friend Circle registered. और इस बीच गेंदबाज की गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया. इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर. स्वीपर आउट दैट. ही जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. So single to end the over and 3 overs completed. In fact after 3 overs 21 on the board. तो यहाँ पर पहले ओवर में 10 रन बने थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 5 रन बने, तीसरे ओवर में 6 रन बना और अंतिम 2 ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा सतीश एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं टॉर्पेडो उस्काना के गेंदबाज. Exactly, Gopi, very good comeback and especially in the last 2 overs we are talking about after Sharan bowled a very good over of just 4 runs and after that Shakir is also getting some inspiration from his partner. He bowled excellent line and length in that last over as well. Now coming back to the equation, Gopi, 21 deducted from 51. That means exactly 30 runs required for the victory in remaining 5 overs. That means each and every ball required runs here, isn't it? And the run rate required is exactly the 6. And now it's going to be a real testing time for both the teams, isn't it? Because Ashwin brought into attack, and now you are watching again. That was absolutely nanna sa munna sa pyara sa chota sa bacha is coming to Arshad Bajal and having a selfie. Almost it's a dream of having selfie with Arshad Bajal. Yes, Gopi, just talking about now 30 ball 30 runs required, Gopi. Now it's very important to see that how Ashwin will going to exploit this condition of under floodlight. Of course, he is back in his natural form in the last 2 matches for Torpedo Uskana, and wait and see how we'll going to continue in this mega final for Torpedo Uskana. बिल्कुल सतीश, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. इस वक्त गेंदबाज अश्विन तमन गेंदबाजी आरंभ करते हैं. पहली गेंद हल्के से गेंद को ढकेल दिया. आजिम ने तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. निशाना डायरेक्ट हिट यहाँ पर लग चुका है और ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन ओवर थ्रो में दूसरा रन नहीं मिलेगा. तो अंपायर के निर्धार का इस वक्त इंतजार है और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर इन दिस सिचुएशन. तो डायरेक्ट हिट इस वक्त लगा था, स्लिम मिड ऑफ फील्डर का फेंका गया हुआ और आजिम देखना है कि जब तक डायरेक्ट हिट लगा था तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. तो इस वक्त तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और देखते हैं यहाँ पर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर वो क्या निर्धारण देते हैं. तो निश्चित रूप से नज़दीकी मामला इस वक्त था और आजिम के दिमाग में ये इंटेंशन ये कश्मकश थी कि शायद स्ट्राइक रोटेट करके वो अरशद बजाल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे और अरशद बजाल ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे. तो पहली गेंद पर खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को मोड़ा ज़रूर, लेकिन स्लिम मिड ऑफ पर जो फील्डर थे वो गेंद तक पहुंचे और गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइक लाइन पर. जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया था तब देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. तो अब जहां तक सवाल है ये रन जुड़ता है तो स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 22 पर. अगर ये रन नहीं जुड़ता है, विकेट गिरता है, तो स्कोर बोर्ड इस वक्त टिका रहेगा 21 पर. और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा एक बेहतरीन ग्रैंड फिनाले KFC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हज़ार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए और 4 के व्यूवर्स इस वक्त इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का इस वक्त मुआयना करते हुए. तो ये बात ये दर्शाता है कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है. और इस वक्त तृतीय अंपायर द्वारा परिशीलन यहाँ पर जारी है. खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुका हुआ है और इस वक्त दोनों खिलाड़ी इस वक्त
तो इस बीच ऑल टाइम 12th प्लेयर यंग फ्रेंड्स उर्वा के हनीफ का आगमन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आज कोई ताली या सीटी सुनाई नहीं दे रही है, शायद टेंस माहौल है तो इस वजह से। और खासकर जब भी हनीफ आते हैं मैदान पर ताली और सीटियों की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, उनके चाहने वाले काफ़ी है यहाँ पर। और जहाँ तक सवाल है, आउट इज द कॉल एंड ही हैज टू गो, आजिम हैज टू गो, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज एंड नाउ सेकंड विकेट डाउन आजीम पे पार्ट्स। और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त जोखिम पर रन चुराने का प्रयास किया और डायरेक्ट हिट से ऑफ फील्डर कस्टम्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। तो अश्विन की गेंद पर कोई भी छक्का लगाता है तो संदीप उर्वा इनकी ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर किसी भी बल्लेबाज अश्विन तमन की गेंद पर छक्का लगाता है तो उन्हें 1000 रुपए का नगद पुरस्कार श्रीमान संदीप उर्वा इनकी ओर से दिया जाएगा। तो 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 4 बैट्समैन। नंबर 4 बल्लेबाज राजेश उबर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और 29 गेंदें बाकी, 30 रन चाहिए, 30 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 29 डिलीवर, स्टिल इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और इस बीच राजेश उबर अपनी गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, स्ट्राइकर एंड पर अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहाँ तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। और इस बीच अश्विन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का तो अरशद बजाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अश्विन की गेंदों का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को इस वक्त थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया, डीप मिड विकेट मौजूद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। और अश्विन तमन दाईं हाथ राउंड द विकेट, अरशद बजाल के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ फैंटास्टिकली स्ट्राइक, और गेंद में जितनी तेजी थी उतनी तेजी के साथ एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ इस गेंद को उछाल दिया, कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली प्लेड बाय अरशद बजाल, और ये चौका ऐसा कहना पड़ेगा उनके ऊपर के दबाव को काफी हद तक कम कर चुका। नाउ द स्कोर इज 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, दैट मींस 26 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 28 डिलीवरीज। अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और देखिए किस तरीके से हर विकेट गिरता है तो टोरपेडोस खाना के समर्थक सपोर्टर्स तालियां सीटी बजाते हैं, हर रन के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा के सपोर्टर्स यहाँ पर तालियां और सीटी बजाते हुए कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक कांटे का टक्कर इस वक्त यहाँ पर जारी, और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। रात के 1 बजने के बावजूद एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, वी आर जस्ट वाचिंग राइट फ्रॉम हियर आवर कमेंटेटर बॉक्स, इस वक्त पूरी तरह खचाखच मैदान दर्शकों से भर चुका है। और इस वक्त उनकी पूरी उम्मीदें यंग फ्रेंड्स का जहाँ तक विजय का सवाल है, उनकी पूरी उम्मीदें पूरी आशाएं इस वक्त अरशद बजाल के ऊपर निर्भर। और जहाँ तक टोरपेडोस खाना का सवाल है, इस वक्त उन्हें अरशद बजाल का विकेट उखाड़ना जरूरी बन चुका है। तो गेंदबाज अश्विन तमन्ना गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाईं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद सामना करने के लिए तैयार, एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को जमीन पर घिसने के बाद इस वक्त अश्विन की गेंदों का सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, इस वक्त गेंद जाती हुई गली की दिशा में, जस्ट सिंगल गॉट सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए चौका इस वक्त लगाने के बाद कोई दूसरा आक्रामक स्ट्रोक उन्होंने नहीं खेला, हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया था। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन और चाहिए कुल मिलाकर, जबकि गेंदें बाकी हैं इस ओवर में 26 गेंदें बाकी, 25 रन चाहिए, 25 टू गेट फ्रॉम 26 डिलीवरीज। राजेश सामना करते हुए अश्विन की गेंद का, यह गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया अजीब तरीके से, 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोड़ बदल चुके हैं। 27 रन आर कमिंग क्वाइट इजीली नाउ एट दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ यंग फ्रेंड्स उर्वा। और जहां तक कमबैक करना है तो टोरपेडोस खाना को इस वक्त चंद कसे हुए ओवर्स और चंद डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकने होंगे इस ओवर में। अंतिम बार अश्विन न तैयार, अरशद बजाल के लिए दाईं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त पॉइंट की दिशा में गेंद पड़ी और इस बार काफी ऊंचा थ्रो इस वक्त, और बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। सो 4th over has been came to an end. 4 overs gone, 7 runs came from this over, 28 on the board, and let's straight away coming back to the equation. 51 minus 28, that means 23 more runs. Now they have to score for victory. 24 balls remaining, 4 over, the required run rate 5.75 runs per over, 24 balls left, 23 runs required, still they got 8 wickets kept intact. तो आइए सतीश, आज अंतिम बार इस श्रृंखला फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। तो 23 रन चाहिए 24 गेंदों पर, तख्ता कुछ हद तक यंग फ्रेंड्स का भारी लगता हुआ, लेकिन कमबैक करना है तो इस वक्त ऐसा करना पड़ेगा टोरपेडोस खाना के गेंदबाज को यहाँ पर अरशद बजाल का विकेट उखाड़ना ही होगा, नहीं तो निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। Exactly, Gopi, what we are talking about, the
importance of this man. Of course, you are talking about the wicket of Arshad Bajal is very important for the team Torpedoes Khana, and even young friends who are supporters also thinking about Arshad Bajal's appearance till the end is very important for the victory for young friends Urwa. The way to see how Arshad Bajal will going to take his team into the victory, because in the previous match also, he played absolutely matured innings, isn't it? The way that he's handled the pressure, and two different innings, Gopi. The previous match he played some innings which is cool and calm. It's played as per the condition required, not an explosive knock. But here he definitely the mixing of both explosive and defensive, both he is played here, and he's absolutely played as per the condition required for his team. Oh, fumble from the fielder, chance for here for to come back for the second, and they made it quite. Oh, opportunity of run out in the non-strikers end. But Ashraf, absolutely absence of mind, is not really watching the non-striker. This is what just telling Gopi the situation that Torpedoes Khana only wants a wicket of Arshad Bajal. They doesn't want to take anyone's wicket. After seeing that, there is an opportunity, the clear opportunity of run out in the non-strikers end, and luckily that the non-striker and Rajesh Ubar just survived from that run out. A couple of runs takes the score into 30 for the loss of 2 wicket. Again, nicely pedaled that one down to square leg region. No need to panic at all. Exactly knows that the run rate required is just under 6 runs per over. The rotation of strike is good enough for the team, young friends, to reach the target. But a lot of hard work required here from the bowlers of Torpedoes Khana if they wanted to back in the game. Shakir is a clever bowler. Know exactly what to do. This time again, he is a clever bowler, and the batter is also the clever batter, and the very experienced campaigner in the side of young friends Urwa. Rajesh Ubar knows that what the condition, what the situation, exactly. His job is just rotate the strike and bring this man back on strike. The wait and see, Arshad Bajal. This time swings and miss. Lovely delivery. Have a look at the turn in that ball. He bowled a slower one, Shakir. Exactly. This is what I am talking about. He's a clever bowler. He's a very intelligent cricketer. I know exactly what the batter wanted to do here. So this is what the Shakir wanted to do here for his team. Get some dot deliveries here. Put some pressure onto the batter. Oh, this time again the ball is going down the leg side. No doubt at all. But he just wanted to go for the big swing of the bat. Missed it completely, leg by call by umpire. Turning out to be the good over. Quite over. But still, this is good enough for young friends Urwa to catch their required run rate. 33 on the board for the loss of 2 wicket. Another 18 more runs required for the victory. 19 more runs required. 18 required from 19 balls. This time again, just a tickle that one down to short fine leg region for a single. He will go to retain the strike. One more over is comes in, and of course the 5 runs came from that over, Gopi. But it's good enough for young friends to get that track what they really wanted. Now, Gopi, 3 overs remaining. 18 balls remaining and 17 runs required for the victory. Of course, maybe the young friends who are in a driver's seat of winning this match, but cricket, everybody knows that the cricket is an unpredictable game. And now, Gopi, the thing is happening here in this middle of the pitch is that who will go into bowl the next over? Whether they're going with the Ashwin or they wanted to bring another bowler. No, they're not going with the Ashwin, but this is, I think it's a good move to get the man in form from the ball, Sharan into ball. I think, Gopi, it's the right move, because this is a very important stage of the innings, isn't it? After seeing the just batter slowly, they're studying the innings, they're settling down in the middle. The wicket is very important here for the team Torpedoes Khana to win this match. That's why they brought their wicket-taking bowler Sharan into attack. बिल्कुल सतीश, एक अच्छा मूव कहा जा सकता है। यहाँ पर शरण को गेंदबाजी के लिए उतारा जा रहा है। इस श्रृंखला में शरण ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया और यहाँ पर उनको इस वक्त गेंदबाजी पर लाया गया है, इसलिए कि वो यहाँ पर विकेट उखाड़े, खासकर अरशद बजाल का। और देखते हैं 17 रन चाहिए 18 गेंदों में। कंडीशन सीम्स टू बी फेवरिंग यंग फ्रेंड्स अ लिटिल बिट, लेकिन कम बैक करने का मौका जरूर है यहाँ पर टॉर्पेडोस खाना के गेंदबाजों को। और देखते हैं यहाँ पर शरण को गेंदबाजी सौंपी गई है और शरण किस तरह इस ओवर में क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर राजेश उबर और अरशद बजाल के ऊपर अंकुश यहाँ पर लगा पाते हैं। Exactly, Gopi. The sensible batting is required from the two batters, but the two left-hand batters, isn't it? It's like slight a bit of a headache here for the bowlers as well, because it's not easy to bowl the left-hand batter round the wicket right arm. First ball slaps that one very nicely down to square leg region for an easy and walkable single. With that single score, but moves on to 35 for the loss of 2 wickets. 16 to get from 17 balls. What a match! This is the kind of mega final that the cricket lovers, the Underarm cricket followers wanted to watch. Of course, the more number of course, 4K
viewers already watching live in that Bedra Media YouTube channel, and more than that, here in spectators gallery in UCG cricket ground. Have a look at the crowd here. Absolutely, Gopi. It's absolutely the jam-packed stadium witnessing this prestigious TFC Champions Trophy mega final. Here again the bowler away from us, Sharan, round the wicket to Arshad Bajal. Passes umpire. This time lofted, and the fielder underneath it is back in the pavilion. Now the match is slowly turning out. I want to tell you, this is going to be a turning point. This is going to be a turning point of the match, as Arshad Bajal just wanted to play the inside-out cricketing stroke, but he's choosing the fielder at wideish long off. This is the right time for the team Torpedoes Khana to go back in the game, to tighten up the screws here, because wicket of Arshad Bajal definitely is going to be a vital breakthrough for the team Torpedoes Khana. एग्जैक्टली सतीश, जिस मकसद के लिए शरण को गेंदबाजी पर उतारा गया था वो मकसद वो यहाँ पर पूरा कर चुका है. अरशद बजाल का स्ट्रोक कुछ गलत नहीं था. इनसाइड आउट क्रिकेट, हैव अ लुक एट दिस इज द रीप्ले, और गेंद किस तरीके से पहुंची थी, लेकिन इनसाइड आउट क्रिकेट पूरी तरह वो खेल नहीं पाए. थोड़ा सा भी स्क्वायर खेलते तो वो गैप फाइन, ही शुड बी फाइंड्स द गैप, लेकिन यहाँ पर खेला था उन्होंने थोड़ा सा सीधा, और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे अकरम शायद उनके हाथों में गेंद पहुंची, और अरशद का विकेट, दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट यहाँ पर साबित हो सकता है. अब 16 balls left and 16 runs required, और अभी भी कहना पड़ेगा सतीश, it could be anybody's game at this situation. Exactly, Gopi. Still it's going to be anybody's game, and the match is evenly poised because of the wicket of Arshad Bajal, isn't it? But nothing much worried about the wicket, Gopi, because the man coming to the middle, one more experienced campaigner, Ajmal. And of course, Ajmal is a perfect player under this condition to handle the pressure, along with the left-hand batter Rajesh Ubar. Wait and see how well he will going to handle the pressure here. But pressure is always there, Gopi, because we are saying that yes, 16 to get from 16, it's not that is a simple thing to do. But under pressure situation, Gopi, it's not so easy. But Sharan did the job for his captain by picking up the wicket of Arshad Bajal. Second time in this over. Third time in this over. Right arm over the wicket. Bows. This is what I'm talking about, Ajmal. He is a very clever cricketer, intelligent cricketer. You know exactly the rotation of strike is much required here. And some friendly sledging between Sharan and Ajmal. Of course, it's a friendly sledging because both are played for a long time for the same team, Gopi, young friends Urwa. So no, each other absolutely, both are knows each other. What is the strong point of Ajmal? Sharan knows that. And Ajmal is not what is the weak point of Sharan. It's altogether is a good contest between Sharan and these two batters. Now the left-hand batter is on strike. Rajesh will going to take the strike here. Sharan bows, looking for the improvisation and chance of run out. Direct it, but I think the batter is safe now, going for the next second. No opportunity to run out. He's in trouble. He's in trouble and he's gone. My goodness, can you believe this? This is what really happened here. They're trying for the second, and where there is no second at all. Now I think once again Torpedoes Khana, they are just getting the momentum back in their favor. At one stage, momentum almost in the hands of team of young friends Urwa. Gopi losing Ajmal in the situation. This is not a good news here for the young friends Urwa, because the way that Ajmal is tried for the second round, it's not a problem of Ajmal, but sometimes it's a problem of the non-striker batter Rajesh. Sometimes if you see this movement, he never knows where he is, when he is going for the run or not. And but because of that confusion, Ajmal thought his partner is coming for the run, so he starts his run. But good piece of fielding by the fielders of Torpedoes Khana. But anyhow, Gopi, huge wicket as far the condition of this cricket is concerned. Exactly, सतीश. अजमल का विकेट का पतन निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर साबित होगा यंग फ्रेंड्स, क्योंकि अजमल द बेस्ट फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर उनका विकेट दुर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में गिर चुका है, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा दिस कुड बी द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस सिचुएशन फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा. लेकिन अब इक्वेशन स्टैंड्स 14 balls and 14 runs. स्टिल इट कुड बी एनीबॉडीज गेम. और नए बल्लेबाज का जो आगमन इस वक्त हो चुका है अश्वित, जो कि वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कमबैक करना है. तो इस वक्त यहाँ पर गेंदबाज को डॉट गेंद यहाँ पर फेंकने ही होंगे. फिलहाल चेम्मी का आगमन हो चुका है, और देखते हैं वो किस तरीके से इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं. The new batter is Chemi, and this time swept that one very nicely. Ball is in there for a while, but safely landed
towards the deep square leg region for an easy single. With that single, scoreboard now moves on to 38 for the loss of 4 wicket. And wait and see how well this batter left and right combination will going to take safely young friends Urwa into home. This is a mega final. That final absolutely like a final. And here is a Sharan. So far he's been outstanding in this particular over. The very important over for the team. Torpedoes Khana. Right arm round the wicket he balls. This time again they're going for the quick single. Ashwin the fielder couldn't manage to stop the single from this batter. With that single score moves on to 39 for the loss of 4 wicket. And another 12 more runs required for the victory in 12 balls. That means each and every ball required a run here for the team young friends Urwa. And at the same time Gopi, Torpedoes Khana required some dot deliveries, isn't it? Dot delivery and as well as the wicket taking delivery is more important for team Torpedoes Khana. But sensible batting, definitely young friends Urwa has got a chance to become the champion of this prestigious KFC Trophy 2025. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है टॉर्पेडोज खानों के यहाँ पर कम बैक करने के लिए। जहाँ तक यंग फ्रेंड्स का सवाल है, हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस वक्त चंद डॉट गेंदे उन्हें फेंकने होंगे यहाँ पर कम बैक करने के लिए। और उन डॉट गेंदे और विकेटों की तलाश में गेंदबाज अश्विन तमन के हाथों में गेंदबाजी सौंपी गई है। इस वक्त अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, और देखते हैं इस ओवर में अश्विन तमन किस तरीके से क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाज चिम्मी और राजेश उबर को यहाँ पर बांध पाते हैं। फिलहाल 12 गेंदे 12 रन, अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है सतीश। Exactly, Gopi. It's absolutely like big gamble taken by the captain of Torpedoes Khana to bring Ashwin into attack, because Ashwin in that last tournament which played at Mudabidre, Gopi, against the same opposition, he bowled fantastic 2 overs. So that captain might be having some faith with his bowling. Of course, one of his hunting ground, I want to tell you, UCG cricket ground. He's got a lot of sweet memories in this particular cricket ground, winning the match for the young friends Urwa when he is referenced for young friends. The wait and see what he is going to do here. The first ball, nicely played it down to short mid-wicket region. Sensible batting here from Rajesh Shubar. Just wanted to rotate the strike here, and he is off the strike as well. Now all question raising in this new phase of young friends Urwa. So Shawan is a new batter in, and wait is how Shawan will go into handle Ashwin. This time, lovely reverse save. Oh, played it in the gap. He played it in the gap. 2 fielders behind the ball. Will it go into ball winning the race? No, just inside the boundary line. He stops that ball there. Coming back for the third as well. Excellent running between the wicket. Even they're looking for the fourth. Oh my goodness. Why he's running for the... Oh, he completed. No. Ball is hit the direct hit, I think so. Now I think it's a 3 runs. I think it's a 3 runs. I think it's a direct hit. Just I want to see it in the replay. Might be the batter is a short of wickets, but unnecessary, Gopi. It is absolutely unnecessary there from Rajesh Shubar. What is doing there? After getting a 3 valuable runs, he has a necessity for the go for the third run. There's a direct hit. That's absolutely direct hit. Absolutely stupidity. No, the decision which is pending, I just umpire having an examination of that. Of course, yes, ask for the third umpire. Umpire goes upstairs. They first wanted to check the boundary. And then they just wanted to check the boundary, and after that they wanted to check the run out. So very interesting indeed. And Gopi, if it is going to be a 3 runs or if it is going to be 4 runs, definitely is going to be a bonus for young friends Urwa. The way that the young man Shravan, I told is a new face in young friends Urwa, the way that he's handled the Ashwin's ball with the reverse shape has been outstanding. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 3 रन भी मिलते हैं तो यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए बोनस यहाँ पर कहलाएगा। और यहाँ पर देखना यह है कि चौथा रन पहले देखते हैं, यहाँ पर गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका गया था ना, ये फील्डर यहाँ पर कोशिश करते हुए अपने पैर के जरिए इस वक्त गेंद को उन्होंने रोका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त चौथे रन के लिए राजेश उबर वहाँ पर दौड़ पड़े थे, लेकिन चौथी रन की उतनी जरूरत वहाँ पर नहीं थी, तो इट्स परफेक्टली सेव्ड इनसाइड द फेंस। एंड नाउ वी हैव टू चेक द रन आउट। तो रन आउट इस वक्त देखते हैं यहाँ पर चौथे रन के लिए क्या बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं या फिर वहां पर रन आउट हुआ है या नहीं। सो नॉट आउट इज द कॉल एंड 4 runs completed.
4 runs completed. और सतीश, this is a big boost for young friends Urwa in this critical circumstances of the match. क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. In this critical condition, the 4 runs in this condition definitely is going to be a bonus for the team, young friends Urwa. 4 runs added to total, and total score now moves on to 44 for the loss of 4 wicket. Now, 7 runs required for the victory in remaining 10 deliveries. Well, there's a 4 which is a run which is given, not out is a call, and of course the wicket keeper's hand which is touches the stumps and then bails her off, and ball which is dropped from his hand. So 4 runs which is completed, 44 for the loss of 4 wicket, 7 runs required for the victory, and 10 balls remaining. So Ashwin, still they got opportunity here. Have to get some dot balls here. Here we go. Right arm over the wicket balls. This time sensible, absolutely sensible batting. Pushes the ball into the cow point region. Picked up a single. Now 6 required from 9 balls. What a final. What a final we are witnessing here. Absolutely the big ooze and goes around the ground. The supporters of both the teams absolutely backing up their teams. But here is the sensible batting will take the team young friends into the victory. But it needed some chance of run out, missed out. Again Ashwin trying for the run out, but I'm missing the stump again. 1 more run completed with the addition of that single score, but moves on to 46 for the loss of 4 wicket. Now 5 required. 8 balls remaining. 5 runs required for the victory. Ashwin desperately wanted to ball the dot ball. Desperately wanted dot ball. Either the wicket taking delivery is badly required here for the team Torpedoes Khana. We can see that closing fielder. Their closing fielder to give some pressure onto the batter. This time down the leg side. Wicket keeper fails to collect the ball. Umpire will going to call that bye. There's an absolutely big miss. The pressure situation here for the fielding team as well. Runs are coming in a singles, but it's good enough for the young friends Urwa. 47 for the loss of 4 wicket. 4 runs required for the victory in 7 balls. What a final. Absolutely fantastic. It was an encounter in this big final. This time chipped it away down to long off, but out of the reach of that fielder at long off. On 1 balls collected by the fielder. 1 more addition to total. Ashwin not that much of effective, Gopi. And last over remaining. They have to get 3 runs to win this match. And what we're talking about, Ashwin will going to do the magic here. Being the magician, he couldn't manage to do the magic. But all we can say that the young man, the new man, Shravan, who did a great job of getting the boundary in that important stage of that innings. बिल्कुल सतीश 8 रन ऐसा कहना पड़ेगा 9 रन बने 9 रन स्कोर फ्रॉम द लास्ट ओवर फ्रॉम अश्विन और श्रवण जो इम्पोर्टेंट चौका जो महत्वपूर्ण चौका उन्होंने अर्जित किया तो इसकी वजह से इस वक्त इस अंतिम ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ लेकिन अब ऐसा कहना पड़ेगा इस अंतिम ओवर जो एरिस इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं इस अंतिम ओवर में एक चमत्कारी गेंदबाजी ही टॉर्पेडोज खाना को यहाँ पर इस मैच में वापस ला सकते हैं लेकिन चमत्कारी गेंदबाजी करने की क्षमता इस वक्त एरिस में है और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में वो किस तरह यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को 3 रन
बनाने से रोक पाते हैं। फिलहाल अभी भी कंडीशन फेवरिंग करता हुआ इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए इस अंतिम ओवर में, और इस वक्त एरिस को फेंकनी है एक घातक गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग इस अंतिम ओवर में। Exactly, Gopi. Harris did the job in the last tournament whenever this team is required some economical over. Now, once again, his experience will go and be tested in this last over. 3 runs required for the victory. Here is the first ball. Driven nicely in the gap towards the long on, but just for a single, not more than that. Now, 2 required from 5 balls. Already the 2000 which is announced by Ravi Shanai for both the players. Of course, they wanted to take their team into the victory. The match which is not yet over. 2 runs required from 5 balls. Everybody knows this. The cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything until you are getting your winning runs. Right above the wicket. Reverse sweep comes into play. Played it in the gap. Now scores are levelled. Now scores are levelled, and just 1 run required for the victory for the young friends Urwa to lift the prestigious KFC Champions Trophy 2025. And now the 4 magical deliveries required here from Harris to win this match. And what a winning is played by Rajesh Hubar under pressure. When they lost Arshad Bajal, he is taking the initiative along with the Shawan. Absolutely, they played a fantastic game. Full toss, winning run. The team Young Friends Urwa, they becoming a champion. Defeated Torpedoes Khana with a margin of 4 wickets. And they are lifting this prestigious KFC Champions Trophy 2025. Congratulations for young friends Urwa. Even I would like to congratulate Torpedoes Khana because of course you lost the final, but you won the heart of cricket lovers by their excellent performance in this mega final. Congratulations for both the teams, and we are going to finish this KFC Champions Trophy. That's it from the commentary box. We are straight away going into the post-match presentation ceremony. Till then, we are saying goodbye from our commentary box. Thank you. Stay tuned for the presentation ceremony. Thank you.
Hall. Hello, check. Mic testing, 1, 2, 3, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing, 1, 2, 3, check.
ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡೆದಂತಹ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2024-25 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ದಯಮಾಡಿ ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸಲೀಂ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ದಯಮಾಡಿ ಸಲೀಂ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉಮರ್ ಶಮೀಂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರಫೀಕ್ KM ಸೂರಿಂಜೆ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇಲಿಯಾಸ್ KM ಸೂರಿಂಜೆ ಸರ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಖಾದರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂತ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025 ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಇಜಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್రైజ్ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025. ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರವೀಶ್ ಶೆಣೈ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರವೀಶ್ ಚೆನ್ನೈ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM, ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಸರ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಲೀಂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅಕೀಮ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಉಮರ್ ಸಮೀಂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಉಮರ್ ಸಮೀಂ ಇವರಿಗೆ ನಾಜೀಮ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ರಫೀಕ್ KM ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರಫೀಕ್ KM ಸೂರಿಂಜೆ ಟಿಂಬರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ವಸೀಂ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರಫೀಕ್ KM ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಿಯಾಸ್ KM ಸೂರಿಂಜೆ
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಸೀಂ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಭೂತರು ಯಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ದಯಮಾಡಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ದ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ the success of this prestigious KFC Champions Trophy 2025. They've done a wonderful job as an umpire, the most experienced umpire, Roland Pinto, receiving the memento from the Pawan, the organizer of this team. ರತೀಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ರತೀಶ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಕೀಮ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ KFC Champions Trophy 2025. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಡನ್ ಬೈ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈಡನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದರ ಆಟಗಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಜೀರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ರತೀಶ್ ರಾಜ್, the man behind the screen as a scorer, one of the most difficult job in commentary box, being the scorer, done a great job. Thank you very much Ratish Raj for your contribution for the success of KFC Champions Trophy 2025. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಮತ್ತು torpedoes ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಆಫ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Done a great job in that live telecast YouTube channel. The proprietor Mr. Irfan kindly request you to please receive our memento. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ Mustafa, the camera operator of Bedra Media, will going to receive the memento from our chief guest for their wonderful contribution for the success of KFC Champions Trophy 2025. The Mustafa will going to receive the memento from Nizam. Thank you. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ 18-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ KFC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಗೋಪಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Nazim to please present this memento for Gopi for his wonderful job as a commentator. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ವಸೀಮ್ರವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಫ್ರಾಮ್ ಅವರ್ KFC ಮೆಂಬರ್ ವಸೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡೋದು ಮೈಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಂದೀಪ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್, ಇದು ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೀಪ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೀಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ನಾಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಗುಡ್ ರನ್ನರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಹಾಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸಂದೀಪ್. ಪವನ್ ಇವರು ಸಂದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ಫಾರ್ your contribution for the success of KFC Champions Trophy 2025. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಗತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಅಶೋಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 97% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ SSLC. ಖಾಲಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು 98%, ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ 98% ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವೈವಿಧ್ಯ, ಛದ್ಮವೇಷ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಠಪಾಠ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಇವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ it's a time for felicitating Vaividya for her excellent achievement. May I request all the chief guests, please do the honor for Vaividya for her wonderful performance in SSLC and first PUC and achievement in extracurricular activities.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್, Umar Shamim and Salim, for your absolutely fantastic gesture for this moment. Of course, thank you very much. Congratulations ವೈವಿಧ್ಯ. ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಸ್, ನಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಆನರ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಮಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಇವಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫಲಪುಷ್ಪದಂಡಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯ ಇವರು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಛದ್ಮವೇಷವಿರಲಿ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರಲಿ, ಕಂಠಪಾಠ ಇರಲಿ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೂಡ 98% ಅಂಕ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೈವಿಧ್ಯ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಪೂರಿ ಎಂ ಕುಲಾಲ್, ಈಜುಪಟು. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರಿತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಳೂರು ಲೇಡಿಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2023-24-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೆನ್ ಸಮುದ್ರ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೈಟ್ಲಾನ್ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1,500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫಿನ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 1 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ರಿದಮಿಕ್ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು
ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾದರ್ in front of him. She is receiving the felicitations. Absolutely the proud father. And now it's a time for the felicitation. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಶಾಲು, ಫಲಪುಷ್ಪ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರುವಂತಾಗಲಿ. ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪೂರಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಟು ಹಾನರಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. Now it's a time for the individual department. First of all, I would like to congratulate the champion of KFC Champions Trophy, young friends Urwa. They're becoming the champion of prestigious Champions Trophy, KFC Champions Trophy. Congratulations, and I would like to congratulate runner-up Torpedoes Khana for their outstanding performance in this tournament. So both the teams deserve the place in the big final, and winning and losing is a part of cricket, but at last the two teams also played like a champion, and they're winning the heart of all cricket lovers. The first individual department, of course, the man of the match of the mega final. The man of the match of the mega final, which goes to, any guess? Yes, absolutely. The gabbar of Underarm cricket, the killer of the ball. It's one and only Arshad Bajal of Young Friends Urwa. I request Liaquat sir, please present this beautiful trophy to Arshad Bajal for his outstanding performance. Yes, Arshad Bajal has got a fantastic season 24-25 from the bat, from the ball. And once again in this KFC Champions Trophy, he's been outstanding, leading from the front, contributed from the bat, and he contributed from the ball as well. Congratulations. Now we are coming to that next individual department, the best bowler of KFC Champions Trophy. The best bowler of the KFC Champions Trophy goes to, any guess? Yes, letter which is start from A. He is not from our district, he is from our neighboring district, Ittanalapanoli. Absolutely, Ashwit from Kasaragod district, he is represented for the team Young Friends Urwa, and I request Naveen Kodical, kindly request you to present the best bowler award for Ashwit for his outstanding performance in the tournament. He's bowled some economical over, he picked up some wicket whenever the team is required from his bowling. And in a very difficult condition, under pressure situation, he bowled, and he deserved the best bowler award. Best batter, Bashid. Best batter. Yes, it's a time to invite the best batter of the tournament. Of course, before calling his name,
ಈಸ್ ಬಿನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ 24-25. ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಜನ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಷಿತ್ ಆಫ್ Torpedoes Khana. Captain is leading from the front. He's absolutely did a great job for the success of his team. So he's deserved the best batter of the tournament, scoring highest run in the tournament. The Bashid, technically very sound player, fantastic striker of the ball, and he got a phenomenal season 24-25 as a captain for Torpedoes Khana. Yes, now is the time for inviting the man of KFC, the man of the tournament, the man of the tournament of KFC Champions Trophy, which is goes to yes, absolutely. It's once again, of course, Arega, killer of the ball. Yes, Gabbar, Kudani Posat, Pudar add up. The killer of the stump bandu, the wicket la de pressure mantre. So he's become the all-rounder as well. So please welcome Mr. Arshad Bajal. He is the man of the series. I request Samim, please present this beautiful memento, beautiful trophy for Arshad Bajal. He's got a habit of winning the man of the series in each and every tournament with this fantastic performance, bat, ball, and even in the fielding as well. So congratulations Arshad Bajal for your wonderful performance in this tournament. Yes, now we are straight away coming into the big one. Without wasting a time, it's time to invite one of the most successful team in the season 24-25. This is their 8th final in the tournament. Please welcome Torpedoes Khana, the runner-up of this prestigious KFC Champions Trophy 2025. I request all the chief guests, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ನವರು ಈ ಒಂದು ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ನಗದು ಬಹುಮಾನ 40,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ Torpedoes Khana in this season. They won the first tournament, the Elmas Trophy in Bangalore. Then they came into, yes, one more big tournament they won, that is YSV Vamanda Padavu. They become the champion in Shakti Nagar, so they become the champion in, in Krishnapura. They also become the champions in the Shakti Nagar. They become the champion in JD Trophy. They become the champion, runner-up in MSC Trophy. Now they are the runner-up in this KFC Champions Trophy. Outstanding journey in this 24-25. Congratulations Torpedoes Khana for their great performance. Yes, now it's a time to invite champion of KFC Champions Trophy, which is one and only the young friends Urwa. One more successful team in the season. Yes, it's the 5th final for young friends Urwa. Outstanding performance, especially even though UCG cricket ground ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ they are unbeatable. Urwa cricket ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. One of the hunting ground for young friends Urwa. They become the champion here. The congratulations for young friends Urwa for their fantastic performance in this tournament. And attractive trophy which is received from our chief guest with a cash prize of rupees 60,000. Which is received from our chief guest, successful captain of young friends Urwa, and Ajmal, and the captain of the side Sajid, receiving that beautiful memento, beautiful trophy, in fact, the Champions Trophy, the KFC Champions Trophy 2025. Just like Bashid is in a fantastic form, even Sajid is also for young friends Urwa, leading from the front as a captain. Is absolutely contributed for the success of young friends Urwa. Chappale barlebeku. Yes, the celebration begins, and now that's it from the presentation ceremony. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.